Good morning, students. I hope those students who are watching me on YouTube and already appeared for the foundation exam, and if they clear their foundation or inter, yes, congratulations to you. Those students who have not succeeded, it's basic advice. Don't waste today's timing also. Start from today. It's okay. Your failure will give you some lessons. Definitely, you will learn something from it, and you will rock your next exam. So don't worry about your results. One more time, you can again start your revisions and you can get success in the next exam. So Institute also wants that there are 3 exams in a year. So it is now very simple for you to crack your exams. चलो तो रिजल्ट कितना परसेंटेज आया, कुछ समझा क्या किसी को? नहीं. Okay. So result percentage I will tell you after 30 minutes. I don't know exactly. If anyone knows result percentage, yes, you can tell me. Chalo, let's start. One, I will tell good news or bad news for you. I don't know, but yes, you can write it in the comment section. Bill of exchange, non-profit organization, and final accounts. I'm going to take partnership plus your incomplete records. Company accounts might be another faculty will take. Okay. So NPO, final accounts, and yes, I got the result percentage. Foundation result this time is good. Overall 19% as compared to last exam. Oh, inter result is bad. Inter result is 15%. ठीक है. So it's okay बेटा. ठीक है, जो भी रिजल्ट लगा है, yes, accept it and do revisions. Very less result for intermediate. ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से शुरू करना. स्कैनर, पास क्वेश्चंस, ओवरऑल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना. डोंट वरी. चलिए, 14%, 19% is a result of foundation. Good. 19% is a good result. अंशु कुमार जी, देखो बेटा, अदर कोचिंग का रिजल्ट हमेशा क्यों अच्छा आता है? तो रीजन इज वेरी सिंपल कि 1000 2000 स्टूडेंट्स में से यदि आपके 50 स्टूडेंट पास होते हैं तो वो बड़ा रिजल्ट. आई वोंट से कि इट्स अ गुड रिजल्ट, बट दे वोंट टेल यू अवर अबाउट देयर फेल्यूर्स. नॉर्मली एवरीवन डिक्लेयर्स अबाउट ओनली सक्सेस, और only that reason, that is a percentage, and I'm not giving you our board of studies classes ka result. Okay, we never have, mentality of having that advertisement and all. We will always, it is a free of cost, anyone can join it. तो अशोक कुमार जी देख लीजिए. यस, तो रिजल्ट आईसीआई जो है, एज अ बीओएस वी नेवर अनाउंस कि हमारे कितने स्टूडेंट्स पास हुए. स्टूडेंट्स ही बता देते. एंड वी नीड नॉट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दिस. दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन, दे विल ज्वाइन इट. ठीक है, चलिए. सो इसलिए हम लोग कभी रिजल्ट अपने को फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ, किसको फर्क पड़ता है तो बेटा, एडवर्टाइजमेंट जिनको अच्छी करनी है, आप समझ लीजिए. तो किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है, आशु कुमार ने. लेट्स स्टार्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज. Why this chapter? But before starting any chapter, beta, first we will quickly revise. Basic rules of accounts. Yes, who is going to answer today? चलो चलो चलो. Basic accounts. अरे अदर स्टूडेंट्स बेटा, प्लीज आज अभी दूसरे नाम आने दीजिए. क्या 5 ही लोगों को पास होना है क्या? हाँ, भरत सोलंकी, आज दूसरे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया. चलो, वेरी गुड बेटा. यस भरत, Yes, अनम्यूट योरसेल्फ. चलिए, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स बेटा, फटाफट बोलिए. traditional approach, personal account, due relationship, debit the debtor, credit the creditor, settlement relationship,
Debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. कहाँ Modern थे आप approach, इतने दिन? यही तो सर. अच्छा ठीक है, चलो आगे बोलिए। Modern approach, asset debit, liability credit, capital credit, income credit, expense debit. बहुत बढ़िया बेटा, सुन के बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो? नई मुंबई. फिर इतने दिन आंसर्स क्यों नहीं दिए आपने? सर थोड़ा नर्वसनेस होता पब्लिक. था? हाँ. आज तो इतना बढ़िया बोला, आज के बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहेगा। क्रेडिट सेल्स एंट्री बताइए। Debtors account, debit to sales account. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। Cash account, debit to debtors account. क्रेडिट परचेसेस। Purchase account, debit to creditors account. डिस्काउंट रिसीव्ड। Creditors account, debit to discount received account. डिस्काउंट अलाउड। Discount allowed account, debit to debtors account. बैड डेट्स। Bad debts account, debit to debtors account. बैड डेट्स रिकवर्ड। Cash account, debit to bad debts recovered account. देन एक्सपेंस पेबल। Expense payable account, debit to expense account. ओए कर दिया ना रिवर्स एंट्री। बोलिए। Expense account, debit to expense payable account. एक ही मिनट, हाँ बेटा, एक ही मिनट। एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस पेबल था बेटा, आपने गलत बोल दिया। Yes, sir. देन यस बेटा, नेक्स्ट वन, इनकम रिसीवेबल। Income receivable account, debit to income account. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। Income account, debit to income received in advance. इतना कैसे क्या आपका याद हो गया बेटा, इतना अच्छे से? सर प्रैक्टिस की है. कितनी प्रैक्टिस की है? बहुत. बहुत प्रैक्टिस की। हाँ. एक ही मिनट, हाँ बेटा, एक ही मिनट से। एक ही मिनट। चलिए, सो बिल ऑफ एक्सचेंज, यस बेटा। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी स्टडीड बिल ऑफ एक्सचेंज एट 12th स्टैंडर्ड, इन 12th स्टैंडर्ड? एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड। चैतन्य जी, यस। समर्थ। आदित्य, हो जाएगा बेटा यदि आपने ट्राई किया, रेगुलर आंसर्स दिए तो। यस। चैतन्य, Yes, sir. आर यू Hello. अवेयर अबाउट दिस एंट्रीज? Yes, sir. According to me, I know very well about the bill of exchange. कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर बिल डिस्काउंटेड? Bill discounted. Bank account debit. Discount charges account debit. Two बिल bills एंडोर्स received. डिसऑनर। यस, यू आर Uh, करेक्ट। बिल एंडोर्स डिसऑनर। Bill endorse dishonor. In this case, we going to debit the debtor and creditor को credit करेंगे, जिसको हैव यू endorse वॉच किया माय था sir. प्रीवियस Endorse. सेशन? Sir, yes, sir. I tell you earlier, I have watched it. Fifth batch ऑलरेडी and seventh batch. देख लिया है क्या आपने मेरा ये ऑलरेडी लेक्चर? नहीं सर, ये मैंने बहुत 11th स्टैंडर्ड में ही देख लिया था. अभी बस मैं रिवीजन के पर्पज से आया हूँ इस क्लास में. अच्छा अच्छा, मुझे लगा नहीं नहीं. आपने कभी लेक्चर देखा हुआ है क्या, क्योंकि डेटर क्रेडिटर ही यूज किया ना आपने। हाँ वो सर सेम ही तो होता है, बस वो नहीं, नेगोशिएबल ड्रॉई इंस्ट्रूमेंट. एंडोर्स ही यूज नहीं किया, इसीलिए मुझे लगा कि। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के वजह से सर वो टर्म्स है बस. ओके ओके, ठीक है। कहाँ से हो आप? सर महाराष्ट्र.
महाराष्ट्र से। चलिए, पंत, ठीक है, वेरी गुड चैतन्य। सी बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के एंट्रीज, नाउ टुडे इट्स अ चैलेंज डे। I will explain you some entries at the beginning of the session only. See, what is exactly bill of exchange? Now, debtors. Now everyone is clear with the debtors to sales account entry. It's very simple. Debtors to sales. Problem is that debtors is not having money. Okay, debtor is not having money. बेटा डबल क्लिक कर दीजिए, आशु कुमार जी, आप मुझे डबल क्लिक कर दीजिए ये इस पे, और डबल टैप कर दीजिए तो आपको आपके इस पे मैं पिन हो जाऊंगा, आप मुझे पिन कर सकते हो। तो डेटर्स टू सेल्स ये एंट्री होने के बाद नेक्स्ट एंट्री इज, नॉर्मली डेटर इज गिविंग अस कैश, कैश कम्स इन टू डेटर्स बैलेंस, वी विल कैंसल इट, करेक्ट? नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? बट नाउ इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट, instead of cash account, we will debit bills receivable account. Why? Logic is very simple. Debtor is asking for you some time. I will pay you. Debtor is telling you, yes, I will definitely pay you, but after certain months, 3 months, 4 months, he takes your time. He does not have immediate cash. And therefore, my dear, we won't debit cash account, but we will debit bills receivable account. He is giving you it in the writing. It is a writing instrument having stamp. Government will take some charges of it. Okay, तो जैसे अपने स्टैम्प पेपर तो सबने सुना ही होगा कभी ना कभी, तो इट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑन गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर, इट इज गिवन in writing that we will pay you after certain months. So stamp paper आया तो it has a validity. If he doesn't pay, then you can file a case against him. It's in simple language. Understood? Now, what we do with this bill of exchange? So this is the entry. So remember the entry. Bills receivable is my asset. How you can recall this? Bills receivable is my asset. Yes. Speak loudly. सब लोग अपने अपने घर पे जोर जोर से बोलोगे, बिल्स रिसीवेबल इज माय एसेट एंड डेटर्स आई एम कैंसलिंग इट. डेटर्स आई एम कैंसलिंग इट. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स विल बी द एंट्री. फर्स्ट एंट्री डेटर्स टू सेल्स, सेकंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो डेटर्स इज गेटिंग कैंसल. डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे. और न्यू अकाउंट कौन सा आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल इज अ न्यू अकाउंट इन योर बुक्स. See how it will affect your trading and P&L account. In P&L and balance sheet, sales you will write over here. Buy sales is your income, trading and P&L. And in balance sheet, debtors now cancelled with bills receivable. So one credit, one debit. Effects are same. Balance sheet में यही दिखेगा. Expenses, income, liability, asset. Friends, now what to do with this bills receivable? Now you have 4 options. How many options you have? 4 options. Very simple. In next 15 minutes, this chapter is over. If you understood these entries. So every one of you, first entry याद रखना, rough pages पे लिख के रखना. Write down on some rough pages. Bills receivable account debit to debtors. So no one has difficulty over here. Now what to do? Now bills receivable account debit now has a debit balance. So we will give credit to bills receivable. Okay, sorry. First option that you have, retain this bill. Retain means no need to pass any entry. No need to pass any entry. Okay, so retain is very simple. There is no entry. You will retain it in the cupboard. Very simple.
Second one. Second one. Yes. Now entry will be bill discounted. Bill is discounted. Now what happens? We are in need of money, and debtor will give us this money after 3 months. So what we'll do? We will visit bank. We'll tell bank bill is of rupees 100. Do one thing. Give me only 90 rupees, and 10 rupees is your income. We will tell bank 10 rupees, don't pay me. It is my loss. But for bank, it is an income. For bank, it is an income. Got the concept? Okay. So bank account is debited. Discount account is debited. To bills receivable. Bill goes out. Now bill asset cancel. My bank balance increases by rupees 90 and loss is of rupees 10. So entry is very simple. What just you have to think? बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट देना है, बैंक को डेबिट देना है एंड डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट देना है. बस ये आपको सोचना है. इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ एंट्रीज का लॉजिक याद रखो. सो नाउ व्हाट हैपेंस? इंस्टेड ऑफ बिल्स रिसीवेबल, नाउ योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग and here your loss is there and bills receivable balance becomes 0. So bills receivable 0 ho gaya because bill is not with you, bill is with bank, and bank balance is getting increased and loss is going to be there 10 rupees, loss as a debit balance. Third situation, you will transfer this bill to your creditor. Creditor means to whom you are going to pay. So creditors, instead of paying cash, you will tell him, I do not have money. Do one thing, I will pay you after 3 months, but not me. On behalf of me, that debtor will pay you. Okay. Whatever the certificate or whatever the instrument you have, not certificate, whatever the instrument you have, that instrument you will give it to your creditors. So your creditors balance cancelled. Creditors has normally credit balance. You will cancel them and your bill also gets cancelled. Okay. So your creditors balance will get reduced and your bills receivable balance get reduced. So ultimately, there is no more creditor, there is no more bill. Okay. Now, in next case, you will send this bill to your agent. Agent G, you can request them, Agent G, I do not have time to collect this money. I will pay you some commission afterwards. First, you come with the bills, and on behalf of me, that agent will collect the money. Okay. So this bill is now with some agent, and agent is called as bill sent for collection. Bill sent for collection. Now these bills are with agents. These bills are with agents and bills are not with you. So your bills will get cancelled. Okay, sir. We got these 4 situations. Now what happens? Bill is getting honor. Honor means that person will pay us. Okay, drawee, that debtor is paying on the due date. Bill is with us. In first case, bill is written. So now bill we will give it to that person. He will give us bank balance. He will give us cash, whatever the case may be. If nothing is mentioned, bank account is debited. These transactions are routed through bank. If nothing is mentioned, bank account is debited. Now in second situation, bill is not with me. Bill is with bank. Bank will visit that debtor's premises. Debtor will pay bank. My role is 0. So here there will be no entry in my books. In third situation, bill is with creditors. Creditors will visit my debtor's premises. Debtor will pay creditors directly. My role, nothing. Okay, no entry in my books. What about bill sent for collection, my dear? Bill sent for collection, we will debit it and we are going to cancel that bill. That agent will, sorry, my agent will pay me a bank balance and my agent balance will get 0
So bill sent for collection is debited. Now I will give credit to bill sent for collection and my bank balance will increase, and whatever the commission, I will pay it later on. So these are the 4 entries. Remember these 4 cases. Beta, if you are able to answer this question very fast, any situation, any time, then your entries are, yes, very simple for you to pass these entries. Today, I will take you from revision from at least 5 to 6 students. All these entries, those students who are not capable to answer it, you can do revision, and day after tomorrow you can answer me. 4th November is the next session. That is on Monday. So you have a big holiday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I don't know about my subjects, I'm telling you. Tomorrow, I don't know the schedule. But now I'm not there for next 4 days with you. We will meet on Monday. Okay, so you have sufficient time to finish this chapter. So dear students, in case of dishonor, no, commission entry we are not going to pass over here. Yes, Samarth. Commission entry we are not concerned because it is outside this chapter, commission entries. So we won't consider that commission entries. Okay, that is the mutual understanding between them. Next one, in case of dishonor. In case of dishonor means what? Debtor is not paying you. You already cancelled debtor's balance, correct? Debtor balance is already cancelled in the second entry only. Debtor's account debited, and then debtor's account is credited. So balance is 0. But now see, if it is a dishonor entry, then debtor's account, you have to revive. You have to reopen. Reopen debtor's account. Debtor's account is getting reopened. So in all cases, debtor's accounts are debited. Debtor's accounts are debited. Debtor's accounts are debited in all situations. Debtor account, debtor account, debtor account, debtor account. Whatever the case. First case is bill return. Now bill is of no use, so we will cancel bills receivable in honor also and in dishonor also. See, in honor, bank account is debited. In dishonor, debtor account is debited. Only that difference. In one account, you will get cash. In another way, you don't get cash. So एक में बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, एक में बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं होगा. Next one. In case of dishonor, debtors account छोटा. हाँ ठीक है. हाँ. Debtors account debit to bank in the second situation. Debtors account debit to bank in case of bill get discounted and dishonor. So to bank will be credited. To endorsee in third case, and to bill sent for collection is the last case. Endorsee means creditors. Endorsee means creditors. So debtors to bank, debtors to endorsee or creditors, debtors to bill sent for collection. So entries are very simple. In first case, debtors account debit to sales. Second case, instead of debtors, bills receivable account debit to debtors. Third case, there are different situations. One is bill return, no entry. Bill discounted, bank account debit, discount account debit to bills receivable. Third entry, bill endorse, creditors account debit to bills receivable. Fourth entry, bill sent for collection account debit to bills receivable. Then in case of honor, first case, bank account debit to bills receivable. Second case, no entry. Third case, no entry because bills are with proper parties and bank account debit to bills sent for collection. But in case of dishonor, all accounts are debited. Endorse मतलब भेजना बेटा. Debtors account debit to bills receivable. Debtors account debit to bank. Debtors account debit to endorsee. And last one, debtors account debit to bills sent for collection. Examples बहुत सारे लेने वाला हूँ, so don't worry about examples. I will explain it with examples. Now I'm going to start with some basic theory, and then beta I'm going to take it one more time, all entries through pictorial presentation. See, what is the overview of this chapter? Introduction part. We'll do introduction part first. Goods are sold on credit. Please अभी पूरा याद रखना. Goods are sold on credit. तो आपने उधारी पे माल बेचा. Then purchaser should give a written promise. Purchaser means buyer. Buyer should give a written promise to pay me on certain date. I sold goods. Buyer should promise me that I will pay on certain date. And that promise, it is expected that buyer pays his debt. And that date, why? Because his written promise are accepted by bank and money is also advanced against it. हो. तो फायदा क्या है? ये प्रॉमिस का
एक प्रॉपर पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन करके लेना, तो बैंक आपको इसके बदले में पैसा देता है। अरे वाह सर, क्या बात है, अभी पैसा दे देगा बैंक, इसीलिए तो बिल डिस्काउंट हुआ ना। तो ये रिटर्न प्रॉमिस का मतलब क्या है? ये रिटर्न प्रॉमिस किसी ने दिया तो इसका मतलब सामने वाला आपको पैसा देने वाला है। सामने वाला मतलब बैंक देने वाला है। जो बंदे से आपने, यस, मैंने किसी को माल बेचा, फॉर एग्जांपल मैंने मोना मैम को माल बेचा। मोना मैम मतलब मेरी बायर है, मैं सेलर हूं। मोना मैम ने मुझे एक चिट्ठी पे लिख के दिया, संकेत सर मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगी। मैं वो लेटर उठाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो प्रॉपर। ऐसे कोई लिख के देगा तो उसको कुछ मतलब नहीं है ऑन रिकॉर्ड। ये कुछ तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसी पेपर पे लिखा हुआ चाहिए, प्रॉपर नोटराइज होना चाहिए। नोटराइज मतलब स्टैंप मारते हैं वो एडवोकेट बैठते हैं ना, छाता लेके, हाँ। तो नोटराइज करते हैं वो लोग, नोटराइज करते हैं मतलब उसको कुछ तो मतलब बनता है वो लेटर का, हाँ भाई कुछ तो है। अब ये पेपर के ऊपर कल उठ के आपने केस भी किया तो भी अच्छा, यस, उसको कुछ तो महत्व रहेगा, आप लीगल केस भी कर सकते हो इसके अगेंस्ट। भले रिजल्ट कब लगेगा वो अलग बात है। वो पैसा लेके मैं बैंक के पास भी जा सकता हूँ लेटर लेके। वो बंदे का लेटर लेके मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, बैंक मुझे उसके बदले में एडवांस भी दे सकती है। गॉट द कॉन्सेप्ट? एनीवन हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस? एनी डिफिकल्टी? ये पूरा पिक्चर क्लियर है? रिटर्न प्रॉमिस इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? इन प्रॉमिसरी नोट मोना मैम विल गिव मी अ प्रॉमिस, मोना मैम लिख के देंगे आई विल पे संकेत सर। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं मोना मैम को ऑर्डर दूंगा आई विल टेक फ्रॉम यू। अकाउंटिंग वाइज नो डिफरेंस, लीगली देर इज अ डिफरेंस, लॉ वाइज देर इज अ डिफरेंस, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स? वन इज इंडियन बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर फ्रॉम सेलर टू बायर, एंड प्रॉमिसरी नोट। हाँ, हियर देर आर थ्री पार्टीज। अभी संकेत सर, संकेत सर मतलब जिन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया संकेत सर इज द ड्रॉवर, मोना मैम इज अ ड्रॉई, मोना शाह इज अ ड्रॉई। एंड एंडोर्सी, एंडोर्सी सपोज उन्होंने ये प्रिया मैम को दे दिया बिल, प्रिया मैम इज अ पर्सन टू हुम आई ट्रांसफर दिस बिल। तो प्रिया मैम को आई ट्रांसफर दिस बिल, इज कॉल्ड एज एंडोर्सी। क्या बोलते हैं इसको? एंडोर्सी। एंडोर्सी द पर्सन टू हुम संकेत सर ट्रांसफर दैट बिल, क्रेडिटर ऑफ द संकेत सर। संकेत सर किसको पैसा देने वाले थे? प्रिया मैम को। तो प्रिया मैम को उन्होंने पैसा नहीं देते हुए बिल दे दिया, और बिल का पैसा कौन देगी? मोना मैम देगी। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा? बायर प्रॉमिसेस टू पे सेलर, मतलब इधर प्रॉमिस करने वाला कौन? मोना मैम, प्रॉमिसर। प्रॉमिसर इज अ मोना मैम, इधर प्रॉमिसर। और किसको प्रॉमिस कर रहे? संकेत सर को। प्रॉमिसी इज अ संकेत सर। गॉट द कॉन्सेप्ट? पहले केस में संकेत सर ड्रॉवर थे और मोना मैम ड्रॉवी थे। अभी मोना मैम प्रॉमिसर हो जाएगी, और प्रॉमिसी किसको प्रॉमिस किया? संकेत सर। सेलर बन जाएगा प्रॉमिसी। एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्टीज? पार्टीज नहीं समझ में आ रहे तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नो डिफिकल्टी, चलो आगे बढ़ना है। हाँ जी, अंशु कुमार जी, आशु कुमार, हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? आशु जी बोलिए जल्दी जल्दी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं है दिक्कत? हाँ। समीर खान, क्या दिक्कत है आपको? बोलिए तो मुझे समझ में आएगा। आशु जी, चलो कोई प्रॉमिस, ये इनको दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख दो, क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं। हाँ जी, और एनीवन हैज डिफिकल्टी? हाँ, चांदनी मैडम बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? बोलिए मैडम। आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ वही आ रही है, बोलिए। हाँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट फिर से समझाओ। क्या नहीं समझ में आया आपको? फिर से समझा तो मतलब आप पूरा टॉपिक फिर मुझे समझाने लगाओगे? क्या सेलर नहीं टू समझ में बायर, आया वो बताइए। सेलर टू बायर और बायर टू सेलर, प्रॉमिस बस फ्रॉम उतना ही बायर है। टू सेलर। एक में ऑर्डर देना है, एक में प्रॉमिस करना है। ऑर्डर कौन देगा? जिसने माल बेचा है क्या जिसने माल खरीदा है? ऑर्डर देने का हक किसको है? बायर को, अरे सेलर को।
तो फिर नहीं समझ वाली एक बात क्या है इसमें चांदनी जी? सेलर प्रॉमिस, सेलर ऑर्डर निकालेगा बायर के हाँ ऊपर, बराबर। हाँ हाँ और सेलर ऑर्डर निकालेगा तो सेलर मतलब मैं हूं, तो संकेत सर ड्रॉवर हाँ बन जाएंगे और मोना मैम ड्रॉई बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी हाँ। बात है? अच्छा, एंड ठीक है। प्रॉमिस और प्रॉमिसी में क्या होता है? हाँ, प्रॉमिस और प्रॉमिसी में कौन प्रॉमिस करेगा? बायर टू सेलर। बायर टू सेलर ना। मोना मैम करेंगे प्रॉमिस और आप करोगे तो क्या सेलर नहीं समझ में आया? पूरा तो समझ में प्रॉमिस। आया, फिर मजा लेते हो रहा आप हमारे। पूरा तो समझ में आ गया आपको। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए आगे। सब कुछ समझ में आता है फिर भी कुछ स्टूडेंट्स, हाँ। हाँ चलो ये देखो, ये है संकेत सर साइकिल लेके जा रहे हैं, ये है मोना मैम जो बहुत शॉपिंग करती है। अच्छा, हाँ जी। तो सेलर ने ये दिया आइसक्रीम, ये देखो, हाँ चांदनी जी, आइसक्रीम हाँ दिया। मोना मैम हाँ, ने क्या दिया बेटा इनको? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। मोना मैम बोले मेरे क्रेडिट, पास आइसक्रीम हाँ का पैसा नहीं है, मैं बाद में दे हाँ दूंगी। तो इन्होंने क्या हाँ। दिया फिर? आइस ये मैंने ऑर्डर दिया, चलो मोना मैम हाँ पे मी। तो मैंने बिल ड्रॉ किया, तो इसमें कौन हाँ। ड्रॉवर कौन होगा? ड्रोअर ड्रॉवर कौन है इस सिचुएशन में? मोना मैम। अरे आप सेलर टू बायर। एंड बायर कौन बन जाएगा? ड्रॉइंग। हाँ, क्या कर रहे हो आप? तो बिल मुझे ड्रॉन बाय मी। कॉन्फिडेंस, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, इसलिए मुझे बोलना नहीं बोलना ये है, आना, इसलिए सब कॉन्फिडेंस आता है, बढ़ेगा। भरोसा रखो, सब आता है आपको। बिल ड्रॉन आपका ना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये चल रहा है। हाँ। हाँ, ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है क्योंकि 11 12 स्टैंडर्ड में आपको आता नहीं रहेगा ये टॉपिक। अभी मैंने गुजराती मीडियम किया है और बहुत साल हो गया, मुझे याद नहीं है क्या आता था। हाँ, गुजराती इसलिए मीडियम आपके बीकॉम किया है मैंने। बैक ऑफ द माइंड आपके लग रहा है कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, पर आपको सब आ रहा है। ये इतना तो बहुत हाँ सिंपल है, बिल ड्रॉ करने वाला मैं था, बिल एक्सेप्ट करने हाँ वाली मोना मैम थी। तो मैं एक्सेप्ट हाँ ड्रॉ करूंगा तो मैं ड्रॉवर बन जाऊंगा, तो बिल ड्रॉन जो हाँ। करता है वो कौन होता है? मोना ड्रॉवर। मैम। और बिल जो ड्रोवर। बिल में ड्रॉ कर रहा हूँ मैडम, में ड्रोवर आप ड्रॉ हो। कर रहा हूँ। और हाँ मोना मैम बिल एक्सेप्ट कर रही है, वापस बोलो, ड्रॉ कौन कर हाँ। रहा है? ऐसा बोलो आप। जोर से। हाँ। हाँ, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज बिल, हम्म। ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द एक्सेप्ट बिल, बिल। बोलिए। हाँ हाँ। ड्रोवर मीन्स हु ड्रॉज बिल, who सिंपल। draws to drawee bill, a drawee bill is accept to bill. ड्रॉई Drawee is एक्सेप्ट्स द accept बिल। to bill. Accept the bill. हिंदी में Drawee. बोले, ड्रॉवर बिल निकालता है, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है। Drawer bill निकालता है, drawee bill accept करता है। तो ड्रॉवर मतलब सेलर होता है, ड्रॉई मतलब बायर होता है ये केस में। हाँ। और मेरे क्रेडिटर प्रिया मैम, मैंने ये बिल किसको दिया? drawee को, मोना मैम को। अरे मोना मैम ने एक्सेप्ट करके भेज दिया ना वापस, चित्र नहीं देखा क्या आपने? मोना मैम ने बिल, ये देखो मोना मैम ने एक्सेप्ट किया बिल और मुझे हाँ। वापस भेज दिया। हम्म। ये देखो मैंने बिल निकाला इधर, फिर हाँ मोना मैम ने बिल वापस दे दिया ना मुझे, एक्सेप्ट हाँ करके। हाँ लिख के हाँ वापस हाँ। बिल किसके पास आया? मेरे पास आया ना, उसकी साइन होके। आपके पास। हाँ हाँ। तो बिल किसके पास है अभी? आपके पास है। हाँ, अभी ये बिल मेरे पास है, मैंने वो बिल किसको दिया? प्रिया मैम, जिनको मुझे पैसा Okay. देना था, तो प्रिया मैम हाँ इज माई क्रेडिटर। हाँ। हाँ, अभी ये बिल मैं किसको दूंगा? और प्रिया मैम को। हाँ, तो प्रिया मैम बन गई एंडोर्सी। इंडोर प्रिया से, मैम हाँ। को क्या बोलते हैं? एंडोर्सी। इंडोर से। हाँ, समझ में आया क्या अभी? हाँ, आ गया आ गया आ गया। अभी इतना चित्र निकालने के बाद मैं आपको क्या हेल्प करूं? अभी ये तो अशोक भी बता देगा, अभी वो तो टेक्निकल बंदा है। अभी ड्रॉई किसको पैसा देगा, मुझे या प्रिया मैम को? प्रिया मैम इंडोर से को। हाँ, जब बाद में पैसा दे देगा तो एंडोर्सी बिकम्स पेई वो केस में। हम्म। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है? इट इज इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग हम्म। containing or unconditional order signed by the maker directing a person to pay a certain sum of money to the order or bearer of the instrument। ये डेफिनेशन इज अ टेक्निकल डेफिनेशन। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब आप कुछ कंडीशन नहीं डाल सकते,
साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ पर्सन, मतलब जो भी ड्रॉवर है वो भी साइन करता है और वो किसी को डायरेक्ट करता है कि पे मी और ऑन बिहाफ ऑफ मी अ सर्टन मनी। ओके। Sir, sir, हाँ जी। so if drawee fails to pay the amount, endorse if from to whom he accepts. I will tell you it, don't worry. Yes, I will solve your questions at the end. Now first focus on parties. So how many parties are there? Yes, कहाँ गए? चांदनी जी आ जाओ, आ जाओ। रेज योर हैंड चांदनी जी, अनम्यूट ही रखिए आप। यू विल आंसर ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी, सब आता है आपको। यस सर। हाँ चलो, पार्टीज कौन कौन थे? सेलर और पार्टीज मोना मैम और मोना मैम ही कब से बोल रहा है? मुझे भी कंसिडर करो यार, पहले हाँ मैंने निकाला ना बिल। हाँ, आई एम बिल ऑन। आपने निकाला, मोना मैम को दिया, आप संकेत सर, मोना मैम दोनों। पहले हाँ संकेत तो सर, मुझे क्या बिल आपने बोलेंगे? मोना मैम को दिया पहले। ड्रॉ सेलर टू बायर। मैं कौन हूँ पार्टी में? सेलर हो, ड्रॉअर हो, ड्रॉअर। ड्रॉवर हूँ, सेलर बायर नहीं। ड्रॉवर ड्रॉई के बारे में बताओ। हाँ, ड्रॉवर ड्रॉअर। मतलब जो बिल निकालता है, हु बिल निकल रहा है, हाँ। पार्टी, हु मेक्स द बिल ऑर्डर। हाँ हाँ, सेकंड वन इज मोना मैम ड्रॉई। हु कंजर्व। एक्सेप्ट्स द बिल, आपने अब भी बोला थोड़ी देर पहले। हाँ, एक्सेप्ट द बिल। हाँ, एंड थर्ड वन इज पे पेई। जो पेई इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज टू बी पेड। हमारे केस में कौन थी पेई? एंडोर्सी, एंडोर्सी। हाँ, प्रिया मैम। हाँ, प्रिया मैम। एंडोर्सी। एंडोर्समेंट का मीनिंग समझ में आ गया ना आपको? हाँ, आ गया आ गया। हाँ, फॉरेन बिल इज अ फॉरेन ऑपरेशंस। इफ बिल इज ड्रॉन इन अदर कंट्री एंड पेड इन अदर कंट्री, एनीथिंग। सो इंडिया में ड्रॉ नहीं, इंडिया में ड्रॉ किया, आउटसाइड इंडिया पे किया, फॉरेन बिल। गॉट द कॉन्सेप्ट? हम्म या फॉरेन में ड्रॉ किया, इंडिया में पे किया तो भी। नाउ प्रॉमिस हम्म और प्रॉमिसी, प्रॉमिस और नोट, सेम क्वेश्चन। सेलर हम्म। बायर, नाउ हु विल प्रॉमिस? कौन प्रॉमिस। प्रॉमिस करेगा? मैं प्रॉमिस करूंगा या मोना मैम प्रॉमिस करेगी पेमेंट का? मोना मैम। हाँ, तो मोना मैम रोई। विल प्रॉमिस मी। हम्म ठीक है, हम्म। सेशन में, सेशन। सो बायर, बायर टू सेलर। हाँ बायर टू सेलर, इन्होंने खाया आइसक्रीम। हम्म। नाउ प्रॉमिसरी नोट, हाँ, आपको। प्रॉमिस इज गिवन। प्रॉमिस, प्रॉमिस गिवन, प्रॉमिसी। ओके, एंड प्रॉमिसी is a, Mona ma'am is a promisor and I am a promisee. हम्म Okay, easy. हम्म। Now this is the instrument, again same definition. What is the difference? Instead of order it is a promise. हम्म। Instead of order it is a promise. एक पाण्याची बॉटल देना मला, पाण्याची बॉटल, पाण्याची बॉटल. Now see beta, let's look in the accounting entries in the books of drawer. हाँ, पहले एंट्री क्या होगा आप ही बताओ चांदनी जी? पहले मैं माल बेचूंगा, करेक्ट? हाँ हाँ। तो एंट्री फॉर सेल्स इज ड्रॉअर, ड्रॉअर अकाउंट टू ड्रॉई। ड्रॉवर अकाउंट टू ड्रॉई। सेल्स की नॉर्मली एंट्री क्या होती है? सेल्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छा, सेल्स एक्सपेंस होता है आपका? सेल्स, आपने बाल में बेचा तो सेल्स हुआ ना। तो चांदनी जी सेल्स की एंट्री नॉर्मली ये सिखाई है मैंने। कैश अकाउंट शांति टू से रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करो, शांति से रूल अप्लाई करो। सेल्स अपना इनकम है क्या एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम को कौन सा बैलेंस सिखाया मैंने? इनकम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आप बाद में आंसर दीजिए, आप शायद से नर्वस हो चुके हो। सेल्स अपना इनकम है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है। आप रूल्स पे भी नहीं फोकस कर रहे हो चांदनी जी। आप हाउ कैन आई
make it simple. If you're not applying rule, if you're not doing revision, it is not only the thing that you just come to the class and will ask me, "Ki sir, explain me once again." It is not like that, no. You have to do proper revision. इनकम को डेबिट बैलेंस होता है क्या कभी? क्रेडिट बैलेंस होता है. नाउ सेल्स अकाउंट को डेबिट दे दिया आपने. इट इज अ बेसिक एंट्री दैट वी आर पासिंग फ्रॉम लास्ट 2 months, 1 month. सबको आते हैं बेसिक एंट्रीज. तो आप घर पे बेसिक एंट्रीज की भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाउ कैन आई हेल्प यू आउट? मेरे पास थोड़ी जादू की छड़ी है कि भाई मैं आपके दिमाग में एंट्रीज डालूंगा. एंट्री तो आप ही को आपका कंप्लीट करना पड़ेगा. सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है कि डेबिट बैलेंस होता है? मेरी इसमें इज्जत जाती है ना कि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं. कूल. सॉरी बट I don't like कि after 1 month if you are telling about me sales is by debit है, तो it is really shameful for me, not for you. इतना कैजुअल अप्रोच थोड़ी हो सकता है क्लास में कि भाई मैं क्लास बंद होने के बाद कुछ भी रिवाइज नहीं करूंगा. कोई सीए नहीं बनेगा ऐसा. बोर्ड ऑफ स्टडीज कितना भी आपको कितना भी बेहतरीन दे, नो वन इज गोइंग टू बिकम सीए यदि आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं करोगे तो. After so many days, if you are not able to answer basic rules of accounts, then what is the revision that you are doing proper? Not at all. Just spending your time. Here, I do not have any magic. Huh? I am telling you all. Chalo, theek hai. Now someone has answered, Satyajit Pradhan, cash account debit to sales. Why cash? If there is a cash, then better there is no use of bill of exchange chapter. Yes, Saida. बोलिए क्या एंट्री होगी? यस सर, अगर एग्जांपल के थ्रू गए तो मोनर ड्रॉई अकाउंट अकाउंट डेबिट. हाँ, मोना मैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स डेटा इज टू माय सेल्स. फर्स्ट एंट्री. सो ड्रॉई लिखेंगे. ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स. Debit the debtor and sales account is credited because it is income. Now drawer and drawee. See pictures. Beta, I made it very simple for you. Drawer जो है, he draws bill, drawee accepts the bill. So now, bills receivable account debit, bills receivable is an asset, and drawee account cancelled. Next entry. There are 4 situations. Situation 1, bill is retained. क्या एंट्री होगी बेटा? बिल रिटर्न मतलब कबड़ में बिल रख दिया. ये देखो कबड़ में बिल आ गया. सो क्या एंट्री करेगी? कबड़ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ऐसा एंट्री होता है क्या? नो सर. सो व्हाट विल बी द एंट्री? नो एंट्री. बिल इज विथ मी ओनली. या डेब्टर्स अकाउंट डेटा टू. नो एंट्री. नो एंट्री. ओके. हाँ, नो एंट्री फॉर रिटेन. देयर विल बी नो एंट्री. व्हाई? कबड़ में बिल रखने का थोड़ी कोई एंट्री पास करता है. नो एंट्री इज गोइंग टू पास. सिचुएशन 2, बिल इज डिस्काउंटेड. व्हाट इज डिस्काउंटेड? यू विल विजिट बैंक. बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करके लाओगे. व्हाट विल बी द एंट्री? डिस्काउंट अलाउड. बैंक अकाउंट डेटा टू डिस्काउंट. बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डेबिट टू Bill goes out, bills receivable, bill cancelled, bill is with bank. So bills receivable has a debit balance. So now give credit. bills receivable account. Two bills receivable account. Now bill is endorsed. Endorsed to Priya ma'am. Correct? Yes. What will be the entry? Receiver. So Priya ma'am account data to Endorse account debit to. Bill goes out. Again bill receivable goes out. account. Bills Goes receivable. out to bills receivable. Situation 4. Bill sent for collection. Bills for collection account data to
Bills receivable account. In every situation, bill is going out. Agent है ये, Popoy. Do you know Popoy? No. Yes. So bill, he's an agent. So bill sent for collection account debit to bills receivable. Any difficulty in this? No, sir. Easy. One more time. Bill retain. What will be the entry? No entry. No Because it is entry. kept only in the cupboard. Bill discounted. What will be the entry? Bank account discounted account to bills receivable account. Yes. Bill endorse. What will be the entry? Creditors account data to bills receivable account. Bill sent for collection. What is the entry? Bill sent for collection account data to bills receivable account. हाँ, पूरा पढ़ाई क्लास में ही हो जाना चाहिए. Bill goes out. Therefore, bills receivable account is credited. In first situation, bank account discount account is there. In third situation, creditors account debit. And in fourth situation, bill sent for collection account debit. Nothing is difficult in this. Yes, sir. Easy था? Yes, sir. Easy था. पहले मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं था सर ये चैप्टर का. अरे everything is very simple. Once you got the logic over here. Everything. You can see here, bills receivable account is already credited. I have written already these entries. Again, I have shown it in the PPT form. अभी तो आपको आना ही चाहिए ये. Now, on due date. Yes, beta. Due date पे bill is honor. Saida ji, where is our bill in first situation? And first, it was in the cupboard. It was in the cupboard. So you will withdraw that bill. You will go to the drawee, Mona ma'am. Mona ma'am will pay you. Correct? So Yes. if she pays, bank account increases or decreases? Increases. And now bill, you will give it to the Mona ma'am. Hmm. Simple. So bill comes in or goes out in first case? Bill is going like giving back. So bank account debit to bills receivable. Got the concept? Yes, sir. Second bill. Where is second bill? Second bill, it have already gone like बैंक में जाके पे कर दिया हाँ, उन्होंने. बैंक में गए जाके हम लोग पैसा कलेक्ट करके आए हैं. नाउ हाँ. मोना मैम के घर पे मैं जाऊंगा या बैंक जाएगी? बैंक. हाँ, so role is of bank and Mona ma'am. So my role is 0. मेरा कुछ रोल ही नहीं ना इसमें. No entry. Okay. Where is third bill? थर्ड बिल एंडोर्सी के पास पैसे प्रिया चला मैम के के पास है. So हाँ. मोना मैम के घर पे कौन जाएगा? मोना मैम के घर पे आप प्रिया ही मैम. जाएंगे. मैं क्यों जाऊंगा भाई? मेरे पास बिल ही नहीं है. मैं जाके क्या करूं घर पे उनके? जो इसके पास बिल है वो जाएगा ना उनके घर पे. यस सर, गॉट इट. तो बिल किसके पास है? मोना मैम के पास आते हैं, प्रिया मैम जाके देते हैं. हाँ. Priya ma'am will give it to the Mona ma'am. So whether my role is there? नो सर. So in my books? नो एंट्री. I guess. No entry. So simple. Just you have to think this diagram. Bill is with whom? And who is going to pay? Yes, In sir. fourth situation, bill is with? Bill is with bills for collection. Agent. के पास So है. who will go to Mona ma'am's place? एजेंट ही जाएगा. Agent जाएगा. And agent will give that amount to me. So my bank balance increases. Yes, sir. And my agent balance decreases to bill sent for collection. Agent was my debtor. Now agent is my giver. Yes, sir. Khatam. One more time. From starting. All these 4 situations. When bill is drawn. First situation. Bill is retained. What is the entry? No entry. No entry. Second situation. Bill is discounted. Bank account data, discount account data to bills receivable account. Very good. Third situation. Bill endorse. Endorse account data to bills receivable account. Very good. Now this is the speed I want. Bill sent for collection. Bill sent for collection account data to bills receivable account. हो गया बेटा. पूरा chapter खत्म हो गया. Then bill honor. In first situation. Where is the bill? ये थोड़ा सर Cupboard. कबर्ड में है सर. हाँ, तो मेरा पैसा आएगा. हाँ. तो मुझे पैसा मिलेगा ना कबर्ड में से जाके. मैं मोना मैम के पास जाऊंगा. मोना मैम will pay me. So my bank balance increases and बैंक bills account data receivable. to
Bills receivable account. हाँ, सेकंड केस, No entry will be passed हाँ, because नो एंट्री. थर्ड there सिचुएशन, no entry. And fourth, the bank account attached to bills for collection agent. खत्म. क्या डिफिकल्ट है? Yes, sir. इज इट डिफिकल्ट? No, sir. आज प्रैक्टिस करो, कल तोते के जैसा बोलोगे 3 दिन बाद. Okay. नेक्स्ट वन, बिल डिसऑनर. नाउ बिल डिसऑनर, either honor or dishonor. If dishonor, I will give you the simple solution. मोना मैम अकाउंट इज रीओपन. मोना मैम का अकाउंट हम लोग वापस खोलेंगे, तो मोना मैम इज अगेन माई डेटर. आई ऑलरेडी कैंसल्ड हर अकाउंट, नो? Hmm. तो ड्रॉई अकाउंट विल बी डेबिटेड इन ऑल सिचुएशन. डेबिट का तो काम हो गया. ओके, ड्रॉई अकाउंट विल बी डेबिटेड इन ऑल सिचुएशंस. गॉट द Yes. कॉन्सेप्ट? Yes, sir. नाउ इन फर्स्ट सिचुएशन, वेयर इज द बिल? Bill, it was in the cupboard itself. And now that bill has no validity. I will throw that bill on Mona ma'am's face. Okay? क्योंकि उन्होंने डिसऑनर किया. ये ले तुम्हारा बिल, पे नहीं करना है तो. ओके, सो बिल इज नाउ ऑफ नो यूज, सो टू बिल्स रिसीवेबल. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. सेकंड बिल, सेकंड इसमें बिल इज विथ बैंक के पास है. बैंक. नाउ बैंक विल विजिट मोना मैम्स प्रीमाइसेस. Hmm. मोना मैम से विल से आई डोंट हैव मनी. देन बैंक विल कम टू whom? To you only. Like वो कह You रहे हैं. only. Very good. So now I have to pay to bank. Mhm. Yes, so bank is my creditor in that case. Yes, sir. So Mona ma'am is my debtor and I will pay to bank. So drawee account debit to bank. I Yes, got the sir. concept or not? Yes, sir. In third situation, where is the bill? Bill, it was It is with the Priya ma'am. प्रिया मैम के पास था. So Priya ma'am will go to Mona ma'am's place. Mona ma'am will say, no, I do not have money. So Priya ma'am will come to You only back. वो कह रहे हाँ, हैं तो नहीं. in my books, I have to receive money from the Mona ma'am. So Mona ma'am is drawee and I have to pay to Priya ma'am. So creditors. So drawee account debit to creditors. Drawee Yes. account debit to creditors. Yes. Last situation. Last situation, where is the bill? एजेंट के पास है. Agent के पास है. So drawee account debit to bill sent for collection. Drawee account debit to bill sent for collection. Yes, sir. Got the concept? Yes, sir. One minute. Huh? Is it difficult or easy, beta? It is easy, sir. Yes. So we have completed all entries in the books of drawer. Drawee. Huh? Drawer, sir. Drawer. What happens, there are 10, 12 entries. That's why students are finding this chapter difficult. If you go logically enough, where is exactly the bill is, then you will very easily, you can answer all these questions. Yes. Okay. Now I will ask you any specific situation. Okay. And you answer me. Just you have to think, where is the bill? Okay, एक ही sir. मन को क्वेश्चन पूछना कि बिल कहाँ है सर, और ये क्वेश्चन का आंसर आया ना, डिसऑनर आया तो ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट देना है. लाइफ इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ डिसऑनर. याद रहेगा? लेट्स प्ले. लेट्स प्ले. Yes, sir. चलो एक बार देखते हैं. टेल मी इफ बिल इज एंडोर्स. मैंने बिल को एंडोर्स किया, मतलब मैंने बिल को प्रिया मैम को दिया. व्हाट विल बी द एंट्री? Bill will be given to endorse. So endorse the account attached to bills receivable account. खत्म हो गया. ये देखो ये सिचुएशन. एंडोर्स टू बिल्स रिसीवेबल. वेरी गुड बेटा. नाउ एंडोर्स बिल्स ऑनर. Sir? Endorse bill honored. Endorse bills honored.
यानी पे कर रहे हैं वो. Mona ma'am pays to Priya ma'am. My role? There is no role. You are there. No No entry. fee. No entry. Simple. Yes, sir. Endorse bill dishonor. Endor bill dishonor. Dishonor का लॉजिक क्या है? कुछ भी होने दो. Which account is debited? Drawee account. Drawee account. And to whom I have to pay? Priya ma'am to endorse. Yes, sir. इतना सिंपल है. Bill discounted. Bill drawee account attached to bank account. Debtors account debit to debtors account debit to Bills receivable account. हाँ what is the entry? Bill discounted पूछा था ना? क्या पूछा था मैंने? सर Sorry. डिस्काउंट का पूछा था. हाँ, तो what is the discounted entry? अगर बिल डिसऑनर्ड है तो ड्रॉवे अकाउंट attached to बैंक अकाउंट. Only bill discounted I am asking, dear. Whether I told you about honor, dishonor. Only discount. हाँ. Bank account attached to discount account attached to bills receivable account. Bank account debit, discount account debit to bills receivable. Yes. Correct. Bill discounted honor. Bill discounted honor. वही honor या dishonor या sir? Honor. Bank Honor, account. my role is zero, my dear. My role is zero. My role is zero. You have to just only tell me. So the honor हुआ तो Mona ma'am will pay to bank. Bank को pay हुआ तो मेरा role zero है. No entry. Yes sir. Simply visualize कीजिए जल्दी जल्दी. We do not have time. Okay आपको sir. थोड़ा सा visualization बढ़ाना पड़ेगा. Don't have any fear in mind. You can easily answer this question. And this is very difficult to face, Sanket sir. You are pro student, Saida ji. It's not like कि कोई भी आके इसको face करेगा. Yes sir. One incident I will tell you. What happened in my branch? I won't say the name of that faculty, but what happened one time, actually before 5-6 years, now I was a senior faculty, no, because I was not teaching at, I was teaching at foundation, inter level also and final level also. So we appointed one experienced faculty of 2 years, new faculty for foundation accounts, and he taught this chapter to my all students of foundation. Difficult topics I will take. So that was the agreement between us. कि difficult topic I will take and simple chapter he will take. So he almost invested 5-7 days in this chapter. And after that, beta, I visited that premises for foundation session. And that sir was also had fear कि अरे बाप रे, सर तो डायरेक्टली एंट्रीज पूछ रहे, मुझे भी नहीं आएंगे. ये उनको डर लग गया था. सो स्मॉल इंसिडेंट आई एम शेयरिंग कि उनको डर लगा था. तो बेटा आप तो स्टूडेंट लेवल हो, फिर भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. बिलीव मी. Okay. Actually, sir, I'm attending these classes after like 20 days gap, sir. मैंने बुक्स ही नहीं खोला था. तो सर क्या ये नवंबर दिसंबर में सब कुछ कवर अप कर सकते हैं क्या जनवरी एग्जाम में देने के लिए? पर ऐसा क्यों किया आपने? सर एक्चुअली वी वेंट फॉर दुबई फैमिली वेकेशन के लिए. These are the excuses. 6 months के लिए कुछ एक्सक्यूज नहीं है. I do not have any shortcut now. सईदा जी, आप ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो आपके लाइफ में कि मुझे दुबई जाना है, या मैं पिछले 1 साल से वेकेशन प्लान कर रहा हूँ. सडनली बीओएस ने मुझे अनाउंस कर दिया कि भाई ये मेरा 3 दिन का प्लान था, बट नो, अभी मैं प्लान पोस्टपोन करूंगा. सो जब मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को मुझे पास करवाना है, तो फर्स्ट माय लाइकिंग इज क्लासेस. तो ये होना ही पड़ेगा बेटा. ऐसा आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो. ठीक है, देखो मेरे स्पीड से कोई तो बोल के दिखाओ. यस, फर्स्ट आई विल, जो स्पीड से मैं बोलूंगा, एनी वन ऑफ यू, आई विल टेक द यूर रिविजन. तो 1 ही मिनट में कितना टाइम लगता है देखते हैं. हाउ मच टाइम इट टेक्स. सो एवरीवन हैज रिटन दिस एंट्रीज, नो? रफ में एवरीवन हैज रिटन. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस एंट्रीज. Debtors account debit to sales, means drawee account debit to sales is the first entry. Second situation में second entry will be bills receivable account debit to drawee account. Bill drawn किया. उसके बाद 4 situations होंगे. Bill retained, first situation no entry. Bill discounted, situation 2 bank account debit, discount account debit to bills receivable. Bill endorsed, creditors account debit to bills receivable. Bill sent for collection, account debit to bills receivable. After that, we have 4 situations. Number 1, bill honor. First case, bank account debit to bills receivable. Second case, no entry because bill is with bank. And third situation, no entry. And fourth situation, bank account debit to bill sent for collection. After that,
will get dishonor. Drawee account will be debited to bills receivable in first situation. Second one, drawee account debit to bank, drawee account debit to endorsee, and drawee account debit to bill sent for collection. 42 seconds. If I don't read narration, मैं narration से नहीं जाऊंगा, only situations in my brain, तो क्या होगा? First one, drawee account debit to sales account. Second entry, bills receivable account debit to drawee account. No entry, bank account debit, discount account debit to bills receivable, endorse creditors account debit to bills receivable, bill sent for collection account debit to bills receivable. Written case, no entry, written case, honor, bank account debit to bills receivable, then no entry, and last situation, bank account debit to bills sent for collection. In case of dishonor, drawee account debit to bills receivable, drawee account debit to bank, drawee account debit to endorse, drawee account debit to bills sent for collection. 26 seconds. Challenge, 26 seconds. Who is accepting? चलो challenge नहीं, at least you answer in my way, all situations together, all entries together. Chaitanya Pant, yes beta. Sir, latest बोला in the चैतन्य books भाऊ of बोला. sorry, हाँ, in the books of drawer, entries of dealing transactions with drawing. so I don't want any explanation now. Sorry. Just go through all entries. I know already In explanation. first case, retain when honor in retain. Starting drawee account debit to sales. Yes, sir. Drawee account debit to sales. Then bills receivable account debit to drawee. Then bills. Sorry, No sir. entry, bill retain. Retain, no entry in case of honor, and in case of dishonor. Dishonor, no beta, no. First you go with the 4 situations. Honor and dishonor, we will talk it later on. Okay, sir. Bill retained, no entry. Bill Bill discounted. retain, no entry. Bill discounted. Bank account debit, discount account debit. 2 bills receivable, and third endorsement, endorsee account debit, 2 bills receivable, and in fourth case, bill sent for collection, account debit, 2 bills receivable. Now honor, first case. In honor, first case, no entry. Sorry, sir. In retain, bank account debit, 2 bills receivable. In second case, when the bill is discounted, no entry. When bill is endorsed, honor हुआ तो उसमें भी entry नहीं आएगी. और फिर लास्ट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसमें एंट्री आएगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. इन केस ऑफ डिसऑनर, फर्स्ट में आएगी डेटर्स अकाउंट, डेटर्स नहीं सर, ड्रॉवे अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. इन सेकंड सिनेरियो, बैंक अकाउंट, ड्रॉवे अकाउnt debit to bank, and in third situation, drawee account debit To endorsee. Fourth situation. Fourth situation, drawee account debit to bill sent for correction. Very good बेटा. क्या अलग फील हुआ आपको 11th 12th और ये क्लासेस में? One retain, no entry. Situation 2, discount, bank account debit, discount account debit to bills receivable account. Situation 3, endorse account credit, debit to bills receivable account, endorse. Situation 4, bills Sent for collection. Bill sent for collection, bank account debit to bills sent for collection. Bill sent for account collection credit. to bills receivable. You honored it. You have to send it to the bill sent for collection. No, आपने honor की entry कर दी. Yes, sir. Bill sent for collection to bills receivable. Yes, sir. Next. Sir, due date, bill honored. Situation 1, bank account debit to bills receivable account. Situation 2, discount, no entry. Situation 3, in honored case, no entry. Situation 4, BFSC, bills sent for collection, bank account debit to bills sent for collection account. Dishonor. Sir? Dishonor. Dishonor. Situation 1. Natasha, dishonor. Natasha कहाँ गया? हाँ. Yes, sir. Dishonor. Bills Situation. First situation, retain, drawee account debit to bills receivable account. Second, discount, drawee account debit to bank account. Third, endorsee, drawee account debit to endorse account. Bill sent for collection,
drawee account debit to bill sent for collection account. क्या बात है भाई, नताशा और सत्यजीत देख के बोल रहे थे बिना देखे बोल रहे थे आप लोग। सर ऐसा लग रहा बिना है तुम देखे मैंने अभी अनम्यूट। तक नोट भी नहीं किया है। नताशा तो बार बार अनम्यूट करो ना बेटा, क्यों म्यूट कर रही हो? सर ये अनम्यूट आपकी साइड से हो गया था आई थिंक। नहीं रे बेटा, मैं नहीं करता किसी को अनम्यूट। मैंने बस सर इन द बुक ऑफ ड्रॉयर ही बस पहले दो ही एंट्री किया था, बाकी सब लिखा भी नहीं मैंने। क्या बात है, कैसे क्या याद हो गया इतना? सर समझा रहे थे तो बोलते जा रहा था आपके पीछे पीछे। और आपको कैसे नताशा इतना याद हो गया? सर अभी टू थ्री टाइम रिवाइज किया तो हो गया। क्लास में ही कर लिया, पहले आ रहा था क्या? नहीं सर, अभी आपने दूसरे स्टूडेंट से रिवाइज करवाया तो बस वो मुझे भी आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। यस, नेक्स्ट वन, परी शर्मा एंड नैना वर्मा। वाह, शर्मा वर्मा जी बोलिए। यस सर। चलो ठीक है, सत्यजीत अनम्यूट कर, म्यूट कर दीजिए बेटा। चलिए, यस परी Yes, sir. शर्मा So जी first, स्टार्ट। the first entry drawee अभी account हम दोनों क्या कर, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री आप बोलोगे एक एंट्री वो बोलेंगे, इस तरीके से रिवाइज करते, ओके? Okay, sir. ओके हाँ जी, सर। बोलिए। चलो, First, sir, drawee नैना account जी debit. शायद से आपका हेडफोन चालू है, हेडफोन को निकाल दीजिए, उसका आवाज बहुत आ रहा है। नहीं सर, हेडफोन नहीं चल रहा है। ऐसा आवाज अलग ही आ रहा है फिर, चलो ठीक है, एक बोलिए। जस्ट एक सेकेंड सर। ऐसा कुछ तो पानी का आवाज आ रहा है, आपको भी आ रहा है क्या परी उसके? Yes, sir. तो अलग ही आवाज है। ओके सर। अभी गायब हुआ, क्या था ये? सर फैन का आवाज था शायद। किसका? फैन का? फैन का सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, हाँ जी बोलिए। एक एंट्री परी, एक एंट्री नैना। So first entry drawee account debit to sales account. नेक्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउnt. So for नेक्स्ट। situation, first retain no entry. Bill discounted bank account debit discount account debit to BR account. So bills sent to endorsee account debit to bills receivable account. The bill sent for collection account debit to BR account. So वेरी गुड। when bill is dishonored, retain bank ऑनर account. ऑनर ऑनर ऑनर, पहले Sorry, ऑनर sir. करो ना, हाँ। When bill is honored, retain bank account debit to bills receivable account. In case of bill discounted, no entry, no rule of us, sir. In case of endorsee, no entry. Fourth situation, bank account debit to bill sent for collection account. So Dishonor. when bill is dishonored, retain drawee account debit to bills receivable account. वाह, In case of bill discounted, drawee account debit to bank account. And so in case of endorsee, drawee account debit to endorsee account. लास्ट। Fourth case, drawee account debit to bill sent for collection account. नैना जी क्या सोचते बैठे थे बीच में? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। यस, बुक सामने तक है परी? No, sir. नैना? No, sir. बिल्कुल नहीं? इतना कॉपी मस्त बंद बताया। करके रिवाइज कर रहे हैं सर। अरे वाह, बिल ऑफ एक्सचेंज एकदम बढ़िया हो गया आप लोगों का तो। इस बार बहुत Yes. सारे इंटर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। Yes, sir, ये Thank you, चैप्टर sir. से मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, बट एग्जाम में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि समझ नहीं आता था उसमें। अभी आपका लेवल भी प्रो हुआ है ना बेटा, Yes, वे आप sir. लोगों को बेसिक समझ में आता है, तब 11 12 में बेसिक्स नहीं समझता था। इफ यू अप्लाई बेसिक डेबिट क्रेडिट तो इट विल बी वेरी इजी। नाउ यू कैन विजुअलाइज दिस सिचुएशन एंड यू कैन आंसर इट। बहुत मस्त बताया बेटा, बहुत सही। यस, थैंक यू बेटा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए सब में इन सीए कोर्स। आई थिंक परी इज ऑल्सो आंसरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं मतलब ऑल एंट्रीज। और नैना तो शायद से, मैंने नैना फर्स्ट टाइम ही आए थे ना बेटा आप? आज तक नैना ने कभी आंसर दिया नहीं है शायद से कभी। नहीं सर, पिछले 3-4 क्लास से आंसर्स कर रही हूँ। शुरू से हाँ, क्लासेस अटेंड कर रही हूँ सर सारे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नैना का, हाँ नैना बराबर। यस, परी का भी नाम आता रहता है बीच में। यस, लास्ट टू। यस, चमर और चामर, आई डोंट नो ये। यस बेटा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ चामर जी?
हो गया ना सत्यजीत, अभी कितनी बार बताओगे बेटा? चलो ठीक है. सो आई होप bill of exchange chapter is very simple for you. uh, we'll do it in the break ले लेते हैं एक छोटा सा. एंड ब्रेक में आप लोग ये थोड़ा सा एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड कुछ स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है तो दे कैन रिवाइज इट इन द ब्रेक. सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. Okay, after break, I will take only specific questions. कि bill endorse, तो you have to answer creditors to bill receivable. I will ask you bill discounted dishonor. You will say drawee account debit to bank. I will ask you bill endorse honor, no entry. Bill sent for collection. Randomly, I will ask you any situation. Randomly. चलो, thank you. पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्रेक में जाने के पहले. दो स्टूडेंट्स यू हैव नॉट कंप्लीटेड. तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड 12:20 को विल कम बैक. तो दिस इज स्क्रीनशॉट 1 एंड ऑनर प्लस डिसऑनर स्क्रीनशॉट 2. चलो, थैंक यू. अशोक जी, टेक अ ब्रेक.
Okay. Students, let's start one more time. Those who are interested to answer, raise your hand. Those students already answered, please do not raise hand. Thank you. यस सर। अरे जी, कहाँ से हो अभिषेक? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र सर, नासिक। नासिक से हो? अच्छा, हो हाँ। गया आपका प्रिपरेशन? यस सर। इजी जा रहा है आपको ये एंट्रीज? यस सर। चलो बताइए, बिल एंडोर्स। बिल इंडोर्स की एंट्री क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल्स। वेरी गुड। बिल एंडोर्स ऑनर। बिल इंडोर्स ऑनर तो उसकी नो एंट्री सर। बिल एंडोर्स डिसऑनर। ड्रॉई टू बी एंडोर्स सर। वेरी गुड बेटा। समर्थ। Yes, sir. बिल सेंड फॉर कलेक्शन। Bill sent for collection. So, sir, it will be bill sent for collection to BR. बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर। Sir, bank account to bill sent for collection. बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर। Then, sir, it will be drawee to bill sent for collection. ठीक है, वेरी गुड बेटा समर्थ। कहाँ Thank से you, हो? sir. Sir, Delhi. बहुत बढ़िया। प्रिंसी। बिल डिस्काउंटेड बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। वेरी गुड। बिल डिस्काउंटेड ऑनर। नो एंट्री सर। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहाँ से हो? सर रांची। अच्छा, बताया था बीच में एक बार। यस। थैंक यू। सुशील कुमार। यस सर। बिल रिटेन्ड। बिल रिटेन सर, नो एंट्री। बिल रिटेन्ड डिसऑनर। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल रिटेन्ड ऑनर। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल बिल डिस्काउंटेड ऑनर। बिल डिस्काउंटेड नो बिल डिस्काउंटेड ऑनर। नो एंट्री। बराबर बोल रहे थे, क्यों नो रुक गए एंट्री। पता नहीं। नो एंट्री सर। कहाँ से हो? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। जी सर। इजी लग रहा है अभी ये चैप्टर? जी सर, बहुत इजी लग रहा है सर। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपका सर अभी। स्ट्रॉन्ग क्या, मैं 2008 से ही मतलब कॉमर्स पढ़ रहा हूँ जो है। इतना बड़ा गैप है फिर? सर मैं एक्चुअल में ये गवर्नमेंट जॉब में हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सीएजी ऑफ अच्छा इंडिया अच्छा, में सॉरी, 10 फिर साल मुझे से। लगा कॉलेज के हो तो आप ही बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं सर, ठीक है। कॉलेज का नहीं। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स लोगों को बोलना चाहोगे जो छोटे आपसे एज में आपके छोटे भाई है? जी सर, मैं सही सबको यही बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर प्रैक्टिस करनी चाहिए मेन तो। और जहाँ कोई दिक्कत आई तो आपके लेक्चर जो है वो उसको देख लें, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। वेरी गुड। और जो रियल लाइफ में है, अभी एक गैप हुआ तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ये भी बता दीजिए सबको, कि जब प्रॉपर टाइम में पढ़ाई किया तो अच्छे फायदे होते हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं मुश्किल से ही टाइम निकाल पाता हूँ सर अपना ऑफिस टाइम में तो। यस, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो जी सर। टाइम पे पढ़ना चाहिए उस टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है किसी के लाइफ में, पर इनको टाइम मिला है तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। और इसके ज्यादा से अलावा भी ज्यादा सर, इसके बोलिए। अलावा भी सर मेरे पास थोड़ा खेती बाड़ी का काम रहता है, अभी गाँव आया हूँ मैं। तो अभी अच्छा, छुट्टियों के काम, हाँ आलू बुवाई का काम भी है, थोड़ा इधर भी देखना पड़ता है सर। देखिए फिर भी, और फिर भी टाइम निकाल देते हो आप। सर निकालना पड़ता है, क्या करें। बराबर है, गुड। आप सीए जी बनने के सर। बाद सबके लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा। पर जी थोड़ा सर ये थैंक यू। लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं इसके वजह से, कोई बात नहीं। सर बड़ा दुख होता है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए हम लोग जो है। नहीं करना चाहिए। मैं सीए करते टाइम इतना ही बोलूंगा, जी जी सर। हमने भी नहीं किया। तो सीए जी पर आगे का लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ना, जी सर। रिटायरमेंट तक। जी बिल्कुल। जी सर। यस, थैंक यू।
थैंक यू सर। क्रिश, यस क्रिश, कहाँ से हो बेटा? क्रिश माइक शायद से आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, आपने कंप्यूटर ऑडियो चालू नहीं किया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। समीर खान लास्ट वन, यस। जी सर। कहाँ से हो आप? सर जौनपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, बोलिए। बिल एंडोस, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्स बिल डिसऑनर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। बिल डिस्काउंटेड, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेबल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड करेक्ट है, एसेट है आपने प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिट। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? सर डेबिट। इनकम, सर क्रेडिट। कैन यू कोरिलेट ऑल दीज एंट्रीज? अभी मैं जैसे आपको बताता हूँ वैसे जी सर। कुछ फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा बताया आपने, जी सर, बहुत सब फायदा हुआ तभी सब पूरा। ठीक है। रैंडमली पूछा मैंने आपको, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इट्स नॉट वेरी इजी कि आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म के आग पे डायरेक्टली बोलोगे, बट स्टिल मेनी स्टूडेंट्स बेटा दे आंसर माय क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस रखो, आज बहुत नए नए चेहरे आए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू, नेक्स्ट टाइम अदर स्टूडेंट्स विल आंसर। आशीष, आकाश, अरे ट्राई करो बेटा, गलत हुआ तो भी आई एम देयर, डोंट वरी, आई एम विथ यू। तो गलत भी हुआ तो भी आपको बोलना है, ठीक है? चांदनी जी, आज जो थोड़ा सा मैंने आपको बोला, तो इट इज फॉर योर बेनिफिट, बिकॉज आप बीच में से आ रहे हो, तो ठीक है। तो चांदनी जी, इट्स नॉट कि मैंने आपको कुछ ऐसा डांटा था वगैरह, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करके आओ, यही मेरा इंटेंशन था, ठीक है? नो सर, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, आपने अच्छे के लिए ही बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा सा कम आया, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, सो डू इट प्रॉपरली। चलो, सो नाउ विल सी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ऑल एंट्रीज। नाउ ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज क्या होंगे, चलो फटाफट देखिए। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, फर्स्ट एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स विल बी द एंट्री, फर्स्ट एंट्री। Then see, he buys something, but he is giving promise or acceptance. He accepts the bill. तो भरत भाई, भरत सोलंकी, कैन यू टेल मी सेकंड एंट्री क्या होगा? भरत जी, यस सर। क्या एंट्री होगा सेकंड? क्रेडिटर्स इज गोइंग टू कैंसल, सो विल गिव डेबिट, यस सर। ठीक है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ जी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ अर्चिता, थोड़ी देर में। हाँ, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल आएगा ना बेटा भारत? हाँ हाँ सर, सॉरी सर। बिल्स पेएबल आएगा, आपने क्या बोला था? मैं सॉरी, ये रिसीवेबल बोल दिया था। सॉरी, पेएबल आएगा, पेएबल नॉट रिसीवेबल। पेएबल, यस। अभी इनको कुछ सिचुएशन से लेना देना है क्या? वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन एनी फोर सिचुएशन, ही इज नॉट कंसर्न ना। आप रिटर्न करो, यू डिस्काउंट इट, यू एंडोर्स इट, और यू गो विद बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ही इज नॉट कंसर्न। यस। ड्रॉवी, Mona ma'am is not concerned. So either she will honor the bill, नो no सर। entry for any situation. Okay. So either bill is honor नो। or dishonor. तो honor हुआ तो bills payable account debit to bank. यस। Payable will get cancelled and bank balance reduces.
एंड इफ डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगा? Bills payable पेबल, account debit to drawer account. हाँ, ड्रॉवर विल बी रीओपन्ड, ड्रॉवर अकाउंट विल बी रीओपन, ड्रॉवर इज अ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर वापस से जिंदा हो जाएगा, Yes. ओके, रीओपन Yes. हो जाएगा. सो आप वन मोर टाइम, फर्स्ट एंट्री स्टार्टिंग से, फर्स्ट एंट्री, Purchase account debit to drawer account. वेरी गुड, परचेसेस टू ड्रॉवर और क्रेडिटर्स. हाँ, सेकंड एंट्री, Drawer account debit to bills payable account. वेरी गुड, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, नो एंट्री फॉर दिस. Yes, no entry. एंड देन बिल ऑनर एंट्री, Bills payable account. Sorry, drawer account debit to bills payable account. bills payable account debit to bank. See, honor Bills or pay. dishonor, payable account will get cancelled, Okay. and dishonor, Bills payable account debit to drawer account. क्यों गलत हो रहा है? परचेसेस टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू, Bills payable. then No entry. no entry for four situations. Yes. Then honor, bills payable Bills to payable bank. to bank. Then bills payable to drawer. Khatam. I will explain this afterwards. Theory है. हाँ. So you have to add 3 grace days in bill of exchange calculation. See, whenever payment is there, we add 3 grace days. 3 grace days we will add in the calculation. Noting charges. Noting charges means in case of insolvency. In case of dishonor. Noting charges means we have to pay to court. We have to make documentation. Okay. And that documentation, who is responsible, beta Bharat, for dishonor? Drawee. So who will bear it? Drawee will bear it. And last holder will pay it. कौन पे करेगा बेटा भरत? Last holder pays this and we will recover it from the drawee. Got the concept? Yes, sir. कौन पे करेगा? वापस से बोलो. Last holder will pay. और recover will किससे pay. करना है? Drawee से. हाँ, तो situation 1, bill is written. तो कौन पे करेगा? Drawer will pay and drawer. recover from drawee. Situation 2, discounted bill. Who will pay it? No entry. Who will pay it? कौन पे करेगा? Noting charges, dishonor में. Drawer. ड्रॉवर कैसे पे करेगा? बैंक विल पे. नो, लास्ट होल्डर कौन है बिल का? बैंक. तो बैंक विल पे. और हम लोग किससे रिकवर करेंगे? वो ड्रॉवर नहीं पे करेगा. Drawer. बैंक को हमें पे करना है और ड्रॉई से रिकवर करना है. हम ड्रॉवर Yes. है. Okay, okay. हाँ. थर्ड सिचुएशन, कौन पे करेगा? एंडोर्सी विल पे. प्रिया मैम पे करेंगे ना, और मोना मैम से रिकवर करेंगे. Yes. क्यों इतना टाइम लग रहा है? Sorry. नहीं ध्यान में आ रहा है क्या? नोटिंग चार्जेस मतलब क्या? नोटिंग चार्जेस मतलब बिल डिसऑनर हुआ तो आपको जाना पड़ेगा ना किधर, तो कि भाई ये डिसऑनर हुआ, किसी को तो बोलना पड़ेगा. किसको Yes. जाके बोलोगे? बिल्डिंग में तो नहीं चिल्लाओगे. जाके Yes. किसको बोलोगे? Last holder को. नहीं रे बाबा, लास्ट होल्डर को जाके बोल के क्या फायदा है? अपने को कोर्ट में जाना है ना, तो कोर्ट का एक पेपर बनाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. जो नोटरी, आपने कभी नोटरी वर्ड सुना है क्या? नहीं सर. नोटरी वर्ड ही नहीं सुना? नोटराइज करके लेना रहता है डॉक्यूमेंट. आपका कुछ भी लिविंग सर्टिफिकेट होगा या कुछ भी होगा, आपने कभी तो नोटराइज किया होगा ना? पता नहीं सर. फिर आपने लिविंग सर्टिफिकेट आपने कैसे क्या दे दिया? आपने किसी का तो साइन लिया रहेगा ना उसके हाँ ऊपर. हाँ सर, लिया था. किसका साइन लिया था? याद नहीं?
हाँ अरे वो छाता लेके बैठते नहीं है क्या कोर्ट के बाहर लोग? हाँ वो टाइपिंग करके भी देते हैं, वो आपको स्टैंप मार के देते। कुछ व्यवहार होगा तो उसके ऊपर हम लोग बनाते एग्रीमेंट, जो स्टैंप ड्यूटी पे करके, वो स्टैंप पेपर तो कभी सुना होगा। हाँ सुना है सर। ऐसा नहीं रे, थोड़ा तो प्रैक्टिकल लाइफ जीने का ना, थोड़ा सा। हाँ तो सर। नोटरी करना मतलब वो ट्रू सर्टिफिकेट है। आप नहीं तो कल उठ के कुछ भी फंसाओगे। तो ये नोटरी वाले पब्लिक जो होते हैं ना, वो नोटराइज करके देते पैसा लेके, और वो फिर आपके कोर्ट में से आप लोग वो प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ कल उठ के गलत हुआ तो डिसऑनर होने के बाद किसी को तो जाना पड़ेगा ना वो नोटरी पर्सन के पास। तो कौन यस। जाएगा उसके पास? लास्ट होल्डर। लास्ट। और कौन रिकवर करके देगा? ड्रॉई से पैसा लेंगे ना इसका, हम थोड़ी यस। हमारे जेब से डालेंगे। उसने इंसॉल्वेंसी किया है, उसने, सॉरी, इंसॉल्वेंसी तो बाद में होगा। उसने पैसा डिसऑनर किया, वो बिल। यस सर। समझा अभी? यस यस। थोड़ा स्लो ग्रास्पिंग हो रहा है, जल्दी जल्दी ग्रास्प कीजिए भरत जी। सुबह तो मस्त बताया था आपने सब कुछ, यस सर। अभी क्या हुआ? अच्छा, परसों बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, चलो। सो फर्स्ट बिल, यस प्रिंसी, बिल इज विथ whom इन फर्स्ट बिल? बोलिए प्रिंसी फटाफट। Yes, sir. बिल इज विथ whom? Last फर्स्ट बिल, first फर्स्ट केस, बिल इज विथ ड्रॉवर। last हाँ। drawer. हाँ, तो कौन पे करेगा? Last holder. वही पे करेगा, ड्रॉवर। और किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से। Bank. सेकंड सिचुएशन, Sorry. Second situation bank से sir. बैंक। बैंक क्या करेगा? Bank debit. बैंक पे करेंगे और ड्रॉवी से रिकवर करेंगे। Yes, sir. अरे वे नोटरी पब्लिक का खर्चा कौन करेगा? वो छाते के नीचे जो बैठे हुए, उनका पैसा कौन देता है? लास्ट होल्डर। Last holder. Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है क्या अभी भी कॉन्सेप्ट? क्या दिक्कत आ रही? अरे क्या दिक्कत आ रही, बताओगे तो मुझे समझेगा यार, क्या इतना सिंपल है। चलो ठीक है, लास्ट होल्डर जाने दो, मैं आई वोंट वेस्ट टाइम। थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो लगाओ। लास्ट होल्डर विल पे द अमाउंट, एंड ड्रॉवर को ये पैसा जो है वो पे करना है जिसका लास्ट होल्डर है, और वो ड्रॉई से कलेक्ट करेगा। वो खुद भी लास्ट होल्डर हो सकता है, बैंक लास्ट होल्डर हो सकती है, क्रेडिटर्स लास्ट होल्डर हो सकता है, या एजेंट लास्ट होल्डर हो सकता है। एजेंट तो आपके पास लाके देगा बिल, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बेयर दैट एक्सपेंस इन केस ऑफ एजेंट। In case of written bill, you are going to borne that expenses. But in case of bank and endorsee will pay that amount and you will collect from drawee. प्रिंसी जी इतना सिंपल है। चलो, नोटिंग चार्जेस की एंट्रीज। व्हाट आर द एंट्रीज? X received from Y a bill of 1000, which is dishonor, and noting charges rupees 10. तो बिल इज विथ अस, ये कौन सी केस हुई? बिल इज रिटेन। यस राजवीर, सर फर्स्ट बिल केस किसके पास है? हम हमारे पास। हमारे पास। तो वो हम लोग नोटरी चार्जेस पे करेंगे। तो यस। हम किससे रिकवर करेंगे? वाई अकाउंट डेबिट। बाय अकाउंट डेबिट लोडिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वाई नोटिंग चार्जेस? वाई अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस 1010, करेक्ट? बाय। टू यस सर। बिल्स रिसेबल, बिल की अमाउंट कितने की थी? 1000। 1000, and we paid extra 10 rupees to bank account 10. We paid that last charges na. यस। Second situation, X endorsed this bill to Z, सो तो who will जेड pay? जेड विल पे। हाँ, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे?
सर हम लोग तो एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जेड पे करेंगे। अरे नोटिंग चार्जेस नहीं, ओवरऑल एंट्री तो करना पड़ेगा ना डिसऑनर का। हाँ सर, तो जेड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। अच्छा, जेड से पैसा आएगा और वाई को पैसा देना है। सो वी विल पे वाई, ही इज डिसऑनर बट स्टिल वी विल पे टू वाई। नो सर, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। वाई अकाउंट डेबिट टू जेड 1010 टू जेड 1010। थर्ड केस, सपोज द बिल इज डिस्काउंटेड विद अ बैंक, क्या एंट्री होगी? वाई वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1010 खत्म। वी हैव टू पे टू बैंक 1010। इज इट डिफिकल्ट? नो सर। सर वो एक्स वाई जेड में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। यस, युक्ता जी पास हो गए। युक्ता जी, कैन यू अनम्यूट यूर सेल्फ? आज क्लास में आए हैं युक्ता जी, रेज योर हैंड। युक्ता, युक्ता जी रेज योर हैंड, शेयर योर एक्सपीरियंस। यस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। युक्ता जी, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग स्टूडेंट्स को? अनम्यूट ही रखिए ना युक्ता जी, मैं आपको म्यूट नहीं कर पाऊंगा, फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे बार बार। कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। सीए बनने का अभी तक फील मत लेना, फाउंडेशन ही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे ही थैंक इंटर यू में सर। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका? यस सर। कितने मार्क्स मिले आपको? सर ओवरऑल 233 है। अकाउंट्स में कितने आए? अकाउंट्स में सर 67। 67, गुड मार्क्स। अच्छा, के कितनी पढ़ाई की थी आपने? बहुत पढ़ाई की थी, आप आंसर्स भी फीसद ही देते सर। थे। ओके, तो कुछ ओपिनियन, कुछ राय, कुछ कंक्लूजन या कुछ आपका एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर? कुछ नहीं सर, आपके वो 100 पेजेस की नोटबुक बहुत काम आई थी। वेरी गुड। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बोल दीजिए सबको। मैथ्स में कैसे पढ़ाई की थी आपने? सर मेरा तो 12th में मैथ्स नहीं था, तो मैथ्स तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था अच्छे से, बट And तब भी उसमें इतने नहीं आए मेरे मैथ्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, पास होना यही बड़ी बात है। अकाउंट्स में यस यू सर। स्कोर्ड ऑलमोस्ट मोर देन 27 मार्क्स, तो वही आपका मुझे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट 50-60 के बीच में लगता है। यस सर। इकोनॉमिक्स में कितना है? 67। हाँ, तो इकोनॉमी मतलब ये दोनों 40s पे निकाले लग रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यू क्लियर योर एग्जाम और आपको इंटर के लिए बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंजॉय कीजिए दिवाली में, बहुत बड़ा तोहफा आपने अपने फैमिली वालों को दिया है। तो इसी तरीके से इंटर में भी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। यस सर। मुझे बाद में कांटेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंजॉय योर सक्सेस। ठीक है? थैंक यू सर। यस, यस सर। थैंक यू, बाय बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक लास्ट होल्डर देखो, आज का फीलिंग बहुत अलग रहेगा एंड स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है आके बातें करते। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे, इसलिए मैं वही रिप्लाई दे रहा था बीच में। ये बेस्ट ऑफ लक तो देता ही रहता हूँ, बट अल्टीमेटली मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ऑल्सो। एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, शी फेल्ड, अभी पता नहीं कैसे फेल हो गई, बट ठीक है, ये होता है एक हद सब्जेक्ट की वजह से, एंड दिस इज अ सीए कोर्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करोगे आपका सक्सेस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रिन्यूअल ऑफ द बिल। अभी रिन्यूअल ऑफ द बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ द बिल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। See, what is the difference between renewal? Renewal, suppose sometimes what happens, drawee does not have money on due date, on due date. So we definitely have to pass dishonor entry. And now he dishonored, so we will charge him interest. What we are going to charge him?
we are going to charge him interest. So in case of renewal, we will charge him interest, and interest entry will be there. So what is the entry that we are going to pass? So new bill is equal to old bill plus interest amount, remember. So some questions are over there in case of renewal bill. So dishonor की entry तो pass करनी है. Dishonor की entry क्या होगी? Drawee account debit to whatever the situation, to bills receivable or bank or might be endorsee. Then we will charge him interest. Now interest is income for me. Drawee account debit. So drawee now new bill is bills receivable account number, fresh bill, renewed bill, bills receivable account 2 to drawee account, or might be some percentage he pay cash 40%, some is bills receivable in the form of new bill, cash 40, bills receivable 60, whatever the case may be. So cash or bank account debit, bills receivable account debit to drawee account. So 3 entries you are going to pass. Drawee to bills receivable, that is a dishonor amount. Noting charges might be you have to pay. Noting charges may be given in the question. If not given, it's okay. Then drawee account debit to interest account, and then cash account debit, bills receivable account debit to drawee account. So these are the renewal entries. And what is retirement bill? Retirement means drawee is paid before due date. Drawee is paid before due date. So interest is, he will take a discount. So exactly opposite. Drawee account debit to dishonor entry, no, bank account debit, discount account debit. We will get some discount. We have to give some discount to him to bills receivable. It's very simple. How many months earlier he has paid, we will give that discount. Okay. So हमें ये discount का percentage is given, and discount is our expenditure. That discount is our loss, not expenditure. Exactly, it is a loss. Okay, accommodation bill, I will take it in the next class. We'll solve some illustrations. आज थोड़ा 1:15 तक करेंगे, because break is already given. तो थोड़े से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे. Accommodation bill, I will explain it in the next class. Very important concept. कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है तो बोल दीजिए, because now it's time to start problems. 20 से 25 मिनट के प्रॉब्लम्स होंगे. Any difficulty you can ask me. Yes, Pari. कुछ दिक्कत है बेटा? कुछ है डाउट्स? तो ये रिटायरमेंट ऑफ बिल वाले एक बार फिर से बताता हूँ मैं, प्रॉब्लम के थ्रू बताता हूँ. डोंट वरी, प्रॉब्लम में देख लेंगे. रिटायरमेंट मीन्स अर्ली पेमेंट. ओके ओके सर. ठीक है. विल टेक सम प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशंस, एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन. चलो सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशंस पे. यस, फास्ट. Who wants to answer? Though it is wrong, don't worry. Who wants to answer? One by one. Yes. Chalo, Naina beta, start. No, Yes, you are sir. getting a wrong answer. It's okay. वो फैन का आवाज बंद कर दीजिए. Okay. Messer Sujata received 2 bills from Aruna. So who is a drawer and who is a drawee? So Mr. MS Sujata is the drawer. Aruna and is Mrs. Drawee. Mrs. Aruna is drawee. So we are doing entries in the books of Sujata. Sujata बोले तो drawer. First bill 10,200 and second bill 15,000. So what is the first entry? Bills received. Bills receivable received. Correct? Yes, sir. What will be the entry, beta? Bills receivable account debit to MS Aruna. To Aruna. Okay. Bills receivable to Aruna. Second entry. First bill is discounted immediately. So discounted with the bank. Bank account debit to discount account debit to bills receivable 10,200 and two bills receivable 10,200. And third bill, you endorse it. MS Sri account debit to Mr. Shri account debit to bills receivable 2. Okay. Yes, sir. So you can pass 2 entries, bills receivable 1, bills receivable 2 to Aruna separately.
Okay, instead of passing two entries, or you pass only one entry, and don't worry about narration. Simply write being bills receivable drawn, second one bill discounted, and third one is bill endorsed in simple language. Okay, Okay, sir. चलो ठीक है, थैंक यू. बहुत बढ़िया तरीके से बताया इन्होंने all these three entries. Now we will move to next question. Illustration 2. बिल ऑफ एक्सचेंज में उन्होंने शायद से इलस्ट्रेशन 1 नया ऐड हुआ है, पिछले टाइम नहीं था. देख लीजिए एक बार. वही, हाँ वो देखा, तो यही सीक्वेंस से लिया है क्या? ठीक है, हो गया पीपीटी, अभी सॉल्विंग चल रहा है. अरे वाह, हाँ, अरे वाह. विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम. परी जी. यस सर. हाँ, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम. हम लोग विजय और प्रीतम दोनों के बुक्स में एंट्रीज करेंगे. आई विल राइट विजय, I will write Pritam over here. So Vijay sold goods to Pritam. Yes, sir. So Vijay is a drawer. हाँ, Vijay is a drawer. Yes, sir. Pritam is a drawee. प्लीज आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है, तो थोड़ा पास में रखिए. अच्छा, सबसे पहले एंट्री इन द विजय बुक, इट इज अ सेल्स एंट्री. Yes, sir. नेक्स्ट, Pritam immediately accept the bill. So Sir. bills receivable is the second entry. Okay, sir. Correct? Sir. Yes, sir. On Pritam requested, so bills receivable on 1st September. Then on the due date, bill be renewed for 2 months. Due date means 1st September plus how many months beta? 3 months. October, November, December. So this will be 4th December. क्या एंट्री होगा? अरे बोलो ना. 4th December. Correct? Yes, sir. हाँ. But first you have to pass dishonor entry. हिडन एंट्री है ये. पहला बिल डिसऑनर हुआ ना. रिन्यूड मींस फर्स्ट बिल डिसऑनर. Yes, sir. हाँ. देन नेक्स्ट एंट्री विल बी बेटा इंटरेस्ट ड्यू. इंटरेस्ट इज योर इनकम. Yes, sir. इंटरेस्ट ड्यू होगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Sir, 3 months. 2 months, No. sir. 2 months. 2 months, sir. हाँ, 9 months का इंटरेस्ट ही विल गिव इन कैश. 2 months का इंटरेस्ट. वाई? बिकॉज 1,06,000 new bill is of 2 months, so 2 by 12 into 9%. He will give it in the cash. Yes, sir. हाँ, so क्या होगा? Amount is, what is the interest amount? 1,06,000. 1590. 1590. Yes, beta, 1590. And then new bill, bills receivable plus cash. Cash of interest 1590. And new bill कितने का? Same amount 1,06,000. Correct? Yes, sir. And sixth entry, honor on due date. 4 December plus 2 months, 7th February. 7th February. 3 grace days you have to add. In case of bill, 3 extra days. Okay, sir. Yes. So how many entries you are going to pass beta over here? The 6 entries. Chalo, bolo. First entry, sales. Sir, Pritam account debit to sales account. Pritam is our debtor to sales Yes. account. Yes, sir. 1,06,000. We have holiday till Sunday beta. Next lecture will be on Monday, Naina. Second entry beta. Sir, bills receivable account debit to Pritam account. Bills receivable to Pritam account. Very good beta.
प्रीतम को कैंसिल किया एंड बिल्स रिसीवेबल को डेबिट दिया. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू ऑल एंट्रीज. नेक्स्ट Yes. एंट्री, डोंट रेफर आंसर. अभी नेक्स्ट क्या है? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. Sir, डिसऑनर मीन्स रिवर्स द एंट्री. sir, Preetham account debit to bills receivable account. Very good. Pritham account debit to bills receivable. Yes, sir. Then, So interest की entry. हाँ, Preetham debit to Pritham interest. Pritham account debit to interest 1590. Correct? Yes, sir. So 4 entries हुए. Then bills receivable plus cash fresh. Bills Yes, sir. receivable account debit Debit, cash account debit to Preetham account. to Preetham account. Yes, sir. बेटा हॉलीडे वी कैन नॉट राइट. नो संडे. अभी संडे एक्चुअली वी आर नॉट टेकिंग इन ड्यू डेट कैलकुलेशन. सो वो बताता हूं मैं आपको. सेकंड बिल वाज मेड ऑन ड्यू डेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. Bills receivable account. इजी और डिफिकल्ट? Easy, sir. वन मोर टाइम. फर्स्ट एंट्री, Sir, Pritham account debit to sales. Yes, Second sir. entry, bills receivable account debit to Pritham. Third entry, Pritham account debit to bills receivable. Fourth entry, interest due हुआ, so Pritham account debit to interest. Fifth entry, bills receivable account debit, cash account debit to Preetham account. Pritham account. And last entry, again Cash. honor, bank account debit to bills receivable. Yes, sir. Yes, एक बार आप बोल के दिखाइए बेटा परी. Sir, Preetham account debit to sales account. Hmm, Bills receivable account debit to Preetham account. very good. फिर सर डिसऑनर हुआ. सर प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. Very good. देन सर इंटरेस्ट ड्यू है तो सर प्रीतम टू इंटरेस्ट अकाउंट. Very good. और फिर सर बीआर आया विद कैश, तो सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट. Very good. सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. वाह रे वाह मेरी शेरनी. देख के बताया बिना देखे बताया? सर बिना देखे. सीक्वेंस याद करने का सिर्फ. Just note down your sequence on the pages. ओके सर. Understood how to solve this question? यस सर. Yes. Now tell me in the books of Pritham, what will be the first entry beta? Purchase. Sequence बताओ. Then फिर सर बिल payable. Payable ना? यस सर. Dishonor. Exactly Exactly. reverse. Interest expenses. Bills payable plus cash paid. कैश पेड. 6 नंबर पे bills payable honor. हाँ बोलो फर्स्ट एंट्री. सर परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय. परचेसेस टू विजय 1,06,000. चलो 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 देखो. हाँ. परचेस टू विजय. हाँ जी, पहला एंट्री ओवर. नेक्स्ट बिल्स पेएबल. फिर सर बिल्स पेबल. बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा एंड विजय अकाउंट विल बी गेट कैंसल्ड. तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल ऐसा बोलना है आपको. यस. थर्ड एंट्री बिल्स पेएबल डिसऑनर. सर बिल्स पेबल डिसऑनर, तो सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. वेरी गुड. ऑन 4 दिसंबर टू विजय अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट Sir. एक्सपेंसेस. सर रिवर्स हो जाएगी. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. इंटरेस्ट रिवर्स नहीं, एक्सपेंसेस हो जाएगा टू विजय अकाउंट. रिवर्स क्या किया आपने? रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं था. हाँ. देन विजय को पेमेंट किया टू कैश इन दी इंटरेस्ट अमाउंट एंड टू बिल्स पेबल नया 1,06,000. करेक्ट. ओके. हाँ. एंड लास्ट एंट्री सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. वाह रे वाह. चलो बिना देखे वापस एक बार. सी बेटा, दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज दिस. आप कैसे याद करते थे आप परी? सर जब मैंने पहले चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तो सर इस चैप्टर से मेरे को बहुत डर लगता था. मतलब मैंने कसम खा ली थी कि ये चैप्टर मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं करना एग्जाम में. फिलहाल मैं रट लेता था इस सारी एंट्रीज को. अभी इजी है बहुत. हाँ सर, अभी तो ब्रेक में भी रिवाइज कर लिए थे सारी एंट्रीज, तो अब इजी है. और देखो ये बड़ा क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस लिखना है आपको. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट सीक्वेंस इन एग्जाम. मतलब रफ पेज पे एंड देन यू सीक्वेंस को याद करना है बस एंट्रीज को. इट्स वेरी सिंपल. ओके सर. बोलिए. सर फर्स्ट एंट्री को परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. देन सर बिल्स पेबल के लिए सर विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. फिर सर जब बिल डिसऑनर होना है तो सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. वेरी गुड. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. वेरी गुड.
देन सर बीपी और कैश भी दिया है, तो सर विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे जब बिल्स पेबल ऑनर हुआ है तो सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Yes, Ashvika, are you able to answer this? Now, can you tell me in the books of Vijay and Pritham together? Ashvika beta. Ansupa जी, बेटा बोलिए बोलिए, ठीक है चलो नेक्स्ट सेशन में बोलिए। यस अमन, ये दो स्टूडेंट्स वर who can answer it बेटा, रेज योर हैंड हो। अमन बोलिए बेटा फटाफट, चलो Yes, फटाफट sir. दोनों एंट्रीज बोल दीजिए, विजय एंड प्रीतम, फटाफट Sir, मतलब sir, we'll याद हो start with जाएगा। the books of Vijay. हम्म For sales, Pritham to sales, हम्म and BR to Pritham, second entry. Third हम्म entry would be डिसऑनर, रिवर्स द एंट्री, प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल। अमन जी क्या हो गया? नेट स्लो रहा है अभी सही है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, Bills receivable dishonored to Pritham to bills receivable, हाँ इंटरेस्ट एंट्री, Pritham to interest. बिल्स Fifth, रिसीवेबल प्लस कैश। bills receivable account debit to cash account debit to Pritham. हाँ जी, Bill honored cash to bill receivable. वेरी गुड। In book परचेसेस प्रीतम की एंट्रीज। in books of Pritham, purchase to Vijay, हम्म bills payable, Vijay to bills payable. Bills हम्म payable got dishonored, so bills payable to Vijay. हम्म Interest is expense, so interest to uh, Vijay. Interest is हम्म expense से डेबिट होगा। और बिल्स पेबल प्लस कैश पेड, विजय टू कैश अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और बिल्स पेबल ऑनर हो गया तो बिल बीपी टू कैश और बहुत बैंक। बढ़िया बेटा। क्या नहीं आ रहा तो क्या आने लग गया अभी? सर मैंने 11th क्लास में पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, अभी तो पूरा ही आ रहा है मेरे को ऐसा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर चलो 11th क्लास में तो नेक्स्ट। जर्नल एंट्री भी नहीं पढ़ा था मैंने, सब अभी आप ही से किया है पूरा। कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी आप बहुत अच्छा बताए हो। सभी एंट्रीज अपने सिर्फ घर पे रिवीजन कीजिए और फास्ट में लिख के देखना। आई एम गोइंग टू गिव ये यू सर स्क्रीनशॉट्स, सो डोंट मैं वरी। रीराइट करूंगा एक बार, हो जाएगा पूरा और क्लियर। बिना देखे ये सेम क्वेश्चंस को टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, ठीक है? ओके सर। सेम क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 120 तक जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करने वाले हैं, अप टू 120। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एंड एवरीवन बेटा इज गोइंग टू सिट अप टू 120। सब लोगों में से कोई पेशेंस नहीं खोएंगे, एवरीवन हैज टू कीप पेशेंस। यस आई नो, ऑलरेडी वी आर डूइंग एक्स्ट्रा एंट्रीज, और एक बार सीक्वेंस याद करना। चलो न्यू स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड दोज हु वांट टू आंसर इट। चलो पहले हम लोग अमित, अमित नहीं है, राजवीर को पूछ लेते, समर्थ को पूछ लेते। चलो समर्थ भाई। यस सर। हाँ जी बेटा, सर चलो बोल दीजिए। सबसे देखो पहले विजय की बुक्स में। अंकिता सेल्स गुड्स, अच्छा नहीं ये नहीं वाला। नहीं ये चल रहा है। ओके ओके। So see, in illustration 2, bill was renewed. Now सर in this सर बस। question, bill was retired. ठीक है? ओके सर। चलो 1 जनवरी, हाँ अंकिता के बुक्स में सर व्हाट सबसे इज द पहले तो एंट्री? नॉर्मल सेल्स की आई, भावेगा टू सेल्स। सेल्स की एंट्री इधर, इधर परचेस की परचेसेस। एंट्री। सेकंड वन, सर देन सेकंड वन पहले बिल्स अंकिता की एंट्रीज कर लेते हैं। रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आएगा यस सर। 5 lakhs। 5 थर्ड lakhs। वन, ऑन 1st of March शी रिटायर्ड द बिल। एक्चुअली बिल 1 अप्रैल को ड्यू हो रहा था ना, मैच्योरिटी डेट यस सर। 4th April, बट व्हेन शी पेड मार्च, फर्स्ट ऑफ 1st मार्च। March, मतलब अर्ली पेमेंट कितना किया? 1 month। 1 month। 1 month अर्ली पेमेंट मीन्स अपना तो नुकसान हुआ ना। 5 lakhs into we have to give discount for 1 month, so 5,000 rupees, correct? यस सर। हाँ, so bill retired means our loss is there, so bills receivable ये कैंसिल बिल्स होगा, कैश कम्स इन, कैश, तो हाउ मच कैश यू विल गेट? कैश 4,95,000 में 495। and loss is 5,000, understood?
Yes, sir. सेकंड केस में क्या होगा, बिल्स पेएबल, एंड इसमें उसका फायदा होगा डिस्काउंट, Yes, sir. 5,000 का गेन. सो शी विल पे कैश 4,95,000. चलो बोलो एंट्रीज. सर सबसे पहले अंकिता की बुक्स में बोलता हूँ, तो भाविका टू सेल्स होगा, नॉर्मल सेल्स की एंट्री हाँ, 5 लाख 5 लाख. देन भाविका को सर टू सेल्स 5 लाख, करेक्ट. बिल्स रिसीवेबल में जाएगा सर, फिर बिल्स रिसीवेबल टू भाविका 5 लाख 5 लाख. वेरी गुड बेटा. बिल्स रिसीवेबल टू भाविका 5 lakhs. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. फिर सर जब ऑनर हो गया बिल, तो अर्ली पेमेंट हुई, फिर बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीपेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक अकाउंट में 495, प्रीपेड में 5,000 और बिल्स रिसीवेबल में 5 लाख. वेरी गुड बेटा. ओनली 3 entries we have to pass. And देन in सर the books of भाविका की Bhavika, बुक्स, परचेजेस टू अंकिता 5 lakhs 5 lakh. purchases to Ankita. Wait. Okay. Second entry. ये सर बिल्स पेबल में जाएगा, तो अंकिता टू बिल्स पेबल 5 लाख 5 लाख. हम्म. एंड देन सर वो उसने अर्ली पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल कैंसिल होगा, बिल्स पेबल टू रिबेट टू बैंक. एक नंबर बेटा, बहुत बढ़िया. चलो सो अभी थैंक यू सर. यस बेटा. अश्विका, वुड यू लाइक टू आंसर दिस 3 entries? अश्विका, ही ऑलरेडी आंसर. हाँ Yes, sir. चलो फटाफट फटाफट. हाँ, by looking into these So 3 entries फटाफट. which one, sir? सेल्स एंट्री. चलो Sales entry, sir. अंकिता के बुक्स में. Bhavika account to sales account. वेरी गुड. भाविका को टू सेल्स. सेकंड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल. Bills receivable, sir. Bhavika, Bhavika account to bills receivable. Wrong. Sorry, bills receivable. बिल्स रिसीवेबल टू भाविका एसेट है ना बेटा अपना. बिल्स रिसीवेबल इज करेक्ट. अश्विका फटाफट बोलिए. Yes, sir. The And third early one payment. was, yes, sir. And So last that's the entry. rebates, sir. So 12% if we calculate, It's okay. We know the amount 5,000. What will be the yes, entry? sir, bank account 4,95,000, rebate 5,000 to bills received. Don't refer answer. No, sir. हाँ चलो भाविका के बुक्स फटाफट. Bhavika ke books, sir. Purchase account to Ankita account, sir. Very good. And, Next. ayo, Ankita account to bills payable, sir. Very good. Next. Yes, sir. Bills payable account to bank account, then rebate on bills. Only the problem is that No, confidence की कमी है. You do not have confidence. sir. And how it is increased? By answering it in the class. Yes, sir. So whenever I'm asking you entries, raise your hand. Though it is wrong, correct, raise your hand. Always. Yes, sir. Yes, very well answered. Don't worry. ठीक है. चलो. Come to question 4. Who is going to answer this now? Raise your hand. Who wants to try? Samarth bhai. Yes. Samarth ji. बोलना स्टार्ट कर See, दूं? we are doing entries in the books of K. Katrak. किसके बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं बेटा हम लोग? के K. कटरा. Katrak. Now Katrak's acceptance. Now Katrak acceptance means that he accepted the bill. So it's a bills receivable or bills payable? बोलो ना समर्थ. सर थोड़ा सा आवाज कट गया, एक बार फिर से बोल दो. कत्रक का एक्सेप्टेंस, कत्रक ने एक्सेप्टेंस दिया तो इट्स अ बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल? सर बिल्स पेबल. हाँ, बिल्स पेएबल. नाउ 2,500 he discharged it by cash payment of 1,000 plus new bill and interest rupees 50. So what is the first entry beta over here? Dishonor. Correct? Yes, Dishonor of bills payable. Then सामने वाला हमें क्या चार्ज करेगा? Interest expenses. And then हमने कैश दिया 1,000 रुपीज cash का. paid plus new bills payable including bills interest. payable. So dishonor of bill 2,500, interest expenses 50, cash paid 1,000, 1,000.
and 1550 is a new bill. यस सर। Correct? So tell me entries now. IMP सर question है ये. सबसे पहले जैसे कैंसिल हुआ तो बिल्स पेबल आ गया डेबिट में, बिल्स पेबल डेबिट। Bills फिर payable सर to. बिल्स पेबल टू सर कैश अकाउंट। सर ओए, वो तो बंदे का नाम आएगा ना, बिल्स पेबल टू. सॉरी, यस सर, बिल्स पेबल टू बासूस अकाउंट। बासु. हाँ, बिल्स पेबल टू बासु 2500. 2500, 2500। नेक्स्ट फिर एंट्री. सर इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो इंटरेस्ट टू बासु 50 इंटरेस्ट टू रुपीज। बासु, वेरी गुड. वी पेड 1000 रुपीज कैश. हाँ, इंटरेस्ट फिर अलग हमने से कैश किया है. पे कर दिया। हाँ जी सर, कैश इंटरेस्ट पे टू कर दिया। बासु एंड बासु टू बिल्स पेबल 1550. डिफिकल्ट और इजी? इजी सर। अभी इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में एक ही एंट्री पास किया है. सी बासु अकाउंट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट. तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितना? 2500 माइनस 1000 प्लस 50 माइनस 1550. सो अल्टीमेट इफेक्ट बताओ. सर तो अल्टीमेट हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल तो अकाउंट। बसो अकाउंट जीरो हो गया ना. हाँ जी सर, बस वो अकाउंट जीरो हो गया। सो एक ही एंट्री इंस्टीट्यूट ने भी पास किया है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। तो हमने स्टडी मैट में एक ही एंट्री पास किया, बट यू इफ यू आर कंफर्टेबल इन 4 एंट्रीज यू कैन पास 4 एक्स्ट्रा एंट्रीज. कौन सा इजी है? सर वैसे तो दोनों इजी हैं, पर लेकिन अगर अलग अंडरस्टैंडिंग अलग में करेंगे ये तो है. ज्यादा इजी है। हाँ जी सर। लिख लिया साइड में. यस सर। इजी था क्या डिफिकल्ट था? इजी था सर। ब्रेक दिस एंट्रीज तो इजी लगेगा. हैव यू रिटन ऑल दीज 3 ट्रांजैक्शंस? हाँ जी सर। हाँ. नाउ जी गुप्ता's acceptance. So for us it is bills receivable. It's not our acceptance. It's G Gupta's acceptance, which is given to Mehta. मतलब endorse, no? Dishonor. एंडोर्स कर दिया। Oh ho. Dishonor. And bill withdrawn against check. So we paid to Mr. Mehta by check. Paid by check. So endorse bill dishonor. What is the entry? सर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू Drawee account debit to endorsee. एंडोर्सी अकाउंट। Who is drawee? Gupta. सर ड्रॉई इज जी गुप्ता। And who is endorsee? Mehta. एम मेहता। So G Gupta's account debit to M Mehta 4000, only 4000 या including noting charges? 2020 ये तो एक इंक्लूडिंग entry नोटिंग थी. चार्जेस। So Gupta account debit to Mehta 4020. Got the concept? यस And सर, then Mehta account debit to bank. बिकॉज यू हैव पेड टू हिम। Gupta is a drawee. Drawee account से पैसा आएगा, endorsee को पैसा देना है, and मेहता को by check हमने पे किया. Mehta to bank. Easy? यस सर। Dalal retires a bill drawn on him by Katrak by 10 discount. Katrak के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा. यस सर। ही रिटायर्स बिल. सो क्या तो कतरक के लिए डिस्काउंट लॉस है क्या प्रॉफिट है? लॉस है सर। लॉस. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1990, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू बिल्स रिसीवेबल 2000. यस सर। इजी? यस सर। लास्ट एंट्री IMP. Katrak acceptance to Patel. Bills payable. यस And सर। Modi's acceptance to Katrak. ये दोनों एक दूसरे को आके मिले. मतलब कतरक ने पटेल को बिल दिया, मोदी ने कतरक को बिल दिया, और ये मोदी और पटेल एक दूसरे को मिले और उनके बीच में बोला कि ये ले कतरक का बिल, ये भी बोल रहा है कतरक का बिल, हमारे लिए दोनों भी कैंसिल हो गए. ना रहेगा पटेल, ना रहेगा मोदी. गॉट द कॉन्सेप्ट? सर एक बार फिर से समझा दो। देखो क्या हुआ था. पटेल भाई ने कतरक के ऊपर बिल निकाला था, और कतरक ने किसके ऊपर बिल निकाला था? मोदी के ऊपर. यस सर। और बाद में ये दोनों एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर थे एक दूसरे के. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं कतरक को पैसा नहीं दूंगा, तू मोदी को पैसा मत देना.
आया समझ में? यस सर। हाँ, तो कतरक पटेल जो है वो पटेल को पैसा नहीं देगा एंड मोदी कतरक को पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये आपस में ये दोनों मिल गए। हो सकता है पटेल और मोदी की शादी हो गई, तो वो बोलेंगे यार कतरक से पैसा, एक को पैसा लेना था, एक को पैसा देना था, तो कतरक के ऊपर कुछ लाइबिलिटी बचा क्या? नो सर। नहीं बचा। और मोदी के ऊपर भी कुछ लाइबिलिटी नहीं आया। आया समझ यस में? सो वी आर गोइंग यस। टू कैंसल बिल्स पेबल विद बिल्स रिसीवेबल। ओके सर। Very easy transaction. One more time in English. See, Katrak's acceptance means it's a bills payable, and Modi's acceptance is bills receivable. So ultimately, what happens? Assume there is a marriage between Patel and Modi. So Katrak does not have to pay to Patel, and Modi will not pay to Katrak. So for Katrak, no more bills payable, no more bills receivable. So bills payable को cancel करना है तो liability cancel means debit. Bills receivable को cancel करना है तो asset cancel means credit. So here bills payable account debit to bills receivable is the simple entry. Understood everyone? Yes sir. Yes, anyone has problem in any entry, you can ask me. So first, second, third, fourth, full marks मिल जाएंगे. First important and fourth one is important. Ashvika, would you like to answer all four entries? Easy beta, don't worry. Sir, Answer it. Chalo, first entry, dishonor of bills payable 2,500. dishonor of 2,500. So if it's dishonor means like we should reverse the Bills payable. so, We will reverse the bills payable. yes sir. So bills So payable it account will debit to Basu. the yes sir. 2,500. Second entry. Interest expenses of 50. Interest expenses account debit to Basu. Then we paid cash and we revised the bill. So bills payable account debit. We paid cash. So here new bill. So Basu account will be debited to cash and two bills payable. 1,000 and 1,550. And fresh bill जो था वो लिया, बस खत्म हो गया. 3 entries you have to pass. One more time. Dishonor of the bill. Dishonor bill will be was Basu account to bills payable account. बेटा डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल मींस बिल्स पेबल कैंसल. पेबल बिल्स पेबल को कौन सा बैलेंस होता है? विच बैलेंस टू बिल्स पेबल अकाउंट हैज नॉर्मली? पेबल मींस विच बैलेंस, लाइबिलिटी और एसेट? Liability. सो लाइबिलिटी को कैंसिल करना है तो व्हाट यू विल गिव? Reverse the entry. फटाफट बोलिए. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बसु, करेक्ट? Yes. Yes, Then sir. interest expenses account debit to Basu, and then Basu we are going to pay to Basu account debit to cash to new bills payable. Is it difficult or easy? One more time. Dishonor of bill. Yes. फटाफट बोलिए अश्विका. Dishonor Be confident. Basu account to dishonor Basu account to bills payable, sir. Basu to bills payable or bills payable to Basu बेटा? Bills payable to Basu, sir. Sorry, sir. Please recall it logically. Recall it logically. Though you are getting the wrong answer, na, next time you come with the correct answer. Correct answer. Correct answer. Number of attempts you fail, you come with the full energy. Okay. So And I'm bills telling payable. you, bills payable, dishonor. You logically you think no, कि bills payable is my liability. Now I want to cancel that liability. Record it. Huh. Yes. So now bills payable account to Basu, sir. Then Second for entry. interest account to Basu account, sir. Third entry. Third account, so we are adding it to bills payable and cash to Basu. We are going to pay them, na beta. So again, now bills payable is a new entry. Cash goes out. So Basu is a receiver. Basu account debit to cash to bills payable. We are not canceling. We are now third entry. We are revising new bill. We are creating a new bill. New bill. We are not canceling bill. So bills payable will be credited. Cash goes out, and Basu is a receiver. Yes.
In first entry, Basu is a creditor. Creditor becomes receiver. Sir taught it us from very first day. All entries logically. Creditor, receiver, dater, giver. ये कब से सिखा रहा हूं मैं आपको. चलो second entry. Bill endorsed dishonor. What is the entry? Bill endorsed. Bill endorsed dishonor. So Bill is with us or Bill is with someone? Bill is with someone else. हमारे पास बिल है क्या? Whether we have a bill for dishonor? Yes, sir. अच्छा, बिल एंडोर्स करने के बाद बिल इज विथ अस. No, sir. Endorse with the some other party, the third party. So bill is with that person, no? And he Yes, sir. gets the drawee dishonor. So what is the entry for dishonor? Bill endorsed dishonor. Today only we revised it. What is the entry? Drawee account debit to endorsee. Yes. ठीक है, चलो. Next time you revise it. I don't Yes, think, sir. Ashwika, you will need a lot to do hard work, beta. Next time you have to come with the energy, beta. Yes, I will answer in the class. Why I am not doing this? I have to answer. I have to work hard. ये एक है ना, एक जोश होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है मुझे. Why I am not able to answer it? ये चाहिए कि yes, I can answer any question. ठीक है. एग्जाम में I don't want to answer. I will ask Sanket sir. I will face Sanket sir's question. I want to pass in exam. I revise it for 1.5 hours, all entries. Dishonor. What is the logic of dishonor? प्रिया मैम को पे करना है, मोना मैम से आना है. So मोना bill is not with me. मोना मैम account debit, drawee account debit to pay to Priya ma'am. So Priya ma'am is my endorsee. Ashwika, you have to be very careful. You have to answer in the class. Yes, And you sir. say to yourself, yes, I want to answer. प्रिया मैम को पैसा मुझे देना है, मोना मैम से लेना है. मोना मैम is a drawee to endorsee. See the situation, create the picture. ऐसा टेंशन में मत आइए. I have only 1 minute to read the answer. Only 1 minute to write the answer. Thinking करना पड़ेगा. You have to develop your thinking, and that is only the reason 19% result is there. Because you are not thinking in the proper way. Only 7 to 8 students are able to answer it. Why? Because they are thinking in this way. They think in the Priya ma'am picture, Mona ma'am का उनके आंखों के सामने वो example आता है. And what happens, you know, Ashwika, why are you not answering it properly? Because you are thinking that I won't answer it in the class. Your fear, you know, your fear is actually giving you failure. And I'm not concerned for failure. But if you are answering second time, third time, fourth time wrong answer, then you have to revise it at home. Yes, sir. Yes. Now it's your choice. On Monday, whether I'm going to face this Sanket sir, and this is the best platform Institute is giving you free of cost. यार और क्या चाहिए आपको? See, I won't tell you that all teachers will teach you like in this way. But this is my style of teaching. I ask each and every student. I normally like to, ask cross questions in the class. So it is not one-way communication. And Ashwika, it is showing you your failure and your success. 3 बार आपने correct answer दिया ना Ashwika, आपको कोई भी question easy लगेगा. Now next time, please prepare yourself on one. And this is the best thing. Non-profit organization, single entry, सभी टॉपिक्स मेरे साथ ही है आपके, तो उस हिसाब से देखिए. ठीक है. Okay, sir. यस. चलो, वी विल से बाय बाय. टाइम आ गया बेटा. सो यू कैन डू नाउ 5 number, 6 number and 7 number. You read the concept of accommodation bill. 5, 6, 7, 8 is your homework. In next session बेटा I will start with the accommodation bill concept. ठीक है. Bye bye. Happy Diwali. One more time, please, beta. This is a very simple chapter. Do not leave it in the option. In 2 days, I'm going to cover this. So don't worry. Next time, please come with the proper screenshots. Yes, I forgot to give you screenshots.
सॉरी, सीक्वेंस है ये. So this is a sequence. You can take a sequence का screenshot. Yes. परी बेटा ये डन करके बोल बेटा. स्क्रीनशॉट 1 बेटा परी. सर डन. वेट हाँ, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. डन सर. 2. सर This is डन. a sequence हाँ बेटा परी. This is not the actual answer. It will help you. Every question के पहले आप ये लिखना. Before every question, okay? ओके सर. डन. 4, 5, 6. Screenshot number 4 नो बेटा. यस सर. डन. एक सेकंड ना बेटा परी. 8 number is difficult one. 8th one you try it. हाँ, take a screenshot. डन सर. Now answer part. 400 pages book, illustration book में index. That is also in the concept book. Sorry, इसमें ही, not concept book. 400 pages book. ओके सर. डन. डन सर. सर डन. डन सर. डन सर. आप लिखते हो परी ये बाद में. यस सर. सर डन. कितना टाइम जाता है परी लिखने में? डन. सर मैं रात में सर 11 बजे तक सारा काम करके फिर मतलब 1 घंटा लगता है, तो रिवीजन और ये दोनों काम हो जाता है. आज तो ज्यादा टाइम जाएगा. कोई बात नहीं सर. 3 दिन है आपके पास, आज ही मत करो. यस. डेफर योर होमवर्क. यस सर. डन. डन सर. 9 ही था ना बेटा. डन सर. सर डन. डन सर. सर डन. डन सर. डन सर. डन सर. ठीक है. So finish this homework. Screenshots are available on YouTube also. So you can take these screenshots from YouTube. Thank you. And one more time, best of luck. Happy Diwali. Enjoy your festival. But ultimately you have to do CA. So maximum time कितना देना है देख लेना. Thank you. Take care. Bye bye. Yes. Happy Diwali. हाँ जी. Happy Diwali अशोक जी.